In progress. Very good morning, everybody. Welcome back to your live virtual classes, Foundation, Paper 1, Accounting. And today we are going to see what is the chapter is from your module 2, chapter 11, Company Accounts. We started with the company accounts last class, unit number 2, which is issue and issue of shares for cash. So in this issue, we started talking about different kinds of adjustments and we finished almost 5 to 6 illustrations the last class. And as per the concepts covered, I've also asked all of you to try illustration 1, illustration 5, and illustration 8 as the homework. I hope you people are practicing. You are after the class sitting down and practicing the sums again, whatever is taught in the class. Make notes, whatever you have understood, and then you are supposed to improve your speed. So this is what is expected. What did we cover last class? So the first concept, very briefly, 5 minutes, 5 to 10 minutes, I will cover a fast recap of what happened in the last class and go ahead with today's concept. So the first concept that we saw was company is a separate legal entity. You can have sole proprietors, you can have partnership, but if you have a company, you will get much more capital and it is an organized form. It has limited liability. So there are a lot of advantages of having a company organization. So when in a company, the money is infused, we call that as capital. So any business money is called capital. But in the case of a company where we are talking about how to get this capital into the business, one way is the owners of directors contribute, the promoters contribute, or else what happens is the company can go in for a bank loan. So loan भी ले सकता है, उससे capital मिल जाती है company को. नहीं तो separate instruments है company को money लेने के a particular instruments, उसको हम shares और debentures में classify करते हैं. So when you are talking about ये chapter 11 हम deal कर रहे हैं company accounts और इसमें हम specifically deal कर रहे हैं हम shares issue करने से हमको money मिलेगा, debentures issue से हमको money मिलेगा, तो हम कैसे account करेंगे, इसमें कौन सा adjustments आएगा. So that we started this particular unit number 2. यूनिट नंबर 1 है, बहुत सारा थियोरी है, आज मैं एंड में वो 10 to 20 मिनट्स में उसको पढ़ा देती हूँ. पर यूनिट नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का the sixth question A part will come from your company accounts. Okay, so 15 plus 5 marks, around 20 marks can be from this entire chapter, this company accounts module 2 chapter 11. All 6 units, this unit number 2 is much important because यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शेयर्स कैसे इश्यू करते हैं, इश्यू करने में कौन कौन सा एडजस्टमेंट्स आएगा, और फिर हम फोरफीचर कैसा करते हैं और उसके बाद री इश्यू कैसा करते हैं. तो ये सारे वाला टॉपिक हम इस यूनिट में कवर करेंगे एंड आज हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे. वी विल बी कंप्लीटिंग दिस यूनिट टुडे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम. What did we start with this? We understood a company when it raises money through issue of shares, that is called as a share capital. A share capital is nothing but the money raised by issuing the shares. And one share is called as a share in the share capital of the company. Which means if 1 lakh rupees is your total amount required by the company, you will divide that into smaller units. How will you divide it? I will fix a face value, which is also called as nominal value, par value. Now, after I fix this, suppose I say it is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees is the total capital. The face value is 10 rupees. So totally, I will be having or I will be issuing 10,000 shares to the public. Now, this is a share in the share capital of the company. That is what I'm saying. So, share is a smaller unit. Okay. So, now, madam, the different types of capital are, first you have the authorized capital. Authorized capital वो होता है जो maximum amount company ले सकता है shares को issue करके. इसको हम कहाँ पे mention करते हैं? Memorandum of Articles under the capital clause. ये होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल वो कंपनी जो रेज कर सकते हैं शेयर्स को इश्यू करके. फिर ऑथराइज्ड कैपिटल से issued capital आता है. What is issued capital? Out of the entire authorized capital, you might not require the entire capital. So whatever is required, you issue those shares to the public. Once after you issue, what the public take up or what are the shares that the public purchase will be called as subscribed capital. Then comes up the called up capital and then comes up the paid up capital. तो ये होता है face value से. Because SEBI has told that every company, whichever is going for issuing shares, should not collect the entire face value in one installment. It should break it. Then we understood that the face value will get broken into minimum 2 and maximum any number as the company wants.
If the face value is 10, if I take an example of 3232, it becomes 10. The first installment is called as application, second installment is called as allotment, the third installment is called as first call, or you can have anything as per the particular company's prerogative. First call, second call, first call, final call, कुछ भी हो सकता है, but installments में divide होता है. तो कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जो कंपनी कॉल करते हैं तो उसको अलॉटमेंट मनी चाहिए, तो आपको लेटर भेजते हैं कंपनी और वो पूछते हैं ये ₹2 अलॉटमेंट का मनी आपसे ड्यू है, प्लीज पे दी अमाउंट. So when that particular call is made by the company, वो होता है called up capital. उसमें से sometimes मैंने तो बोला calls in arrears, calls in advance का concept. So calls in arrears हो सकता है ये वाला paid up capital में. तो if you call ₹2 allotment का, you might not receive the entire amount also. So then paid up capital, called up capital से कम होता है. Okay. So if everybody pays the money, called up and paid up capital same. If some of them don't pay the money, called up capital more, paid up capital will become less because आपको money receive नहीं हुआ, तो आप उस capital से उसको deduct करके show करना है. And then we understood about something called as the reserve capital. Reserve capital वो part of the authorized capital होता है जिसको हम call नहीं करते हैं, वो होता है uncalled capital. इसका मतलब है हम इसको call करते हैं at the time of closing the company. Because when you close the company, there are few expenses and few amount the company needs. So what it will do, reserve a capital, like petrol reserve में आ जाता है, हमको warning देता है. At the same time, like the same way, we also have a particular capital set aside. उसको हम नहीं कॉल करते हैं. किस टाइम पे कॉल करते हैं, उसका यूसेज इस टाइम पे होता है जब कंपनी क्लोज हो रहा है. उसके 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 वजह से बहुत सारा एक्सपेंसेस हो सकता है, वो एक्सपेंसेस हम ये कैपिटल को कॉल करके हम यूज करते हैं. ओके. तो रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिखाते हैं. रिजर्व कैपिटल वैसा ही होता है, या यू डोंट शो रिजर्व कैपिटल एनीवेयर. तो आई टोल्ड यू अबाउट अ थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन reserve capital and capital reserve? Just writing the words in the opposite side? No. Capital reserve is formed on getting capital profits. हम जब कैपिटल असेट्स को सेल करके प्रॉफिट्स बनाता है उससे, उस कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं. एंड कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे. सो दिस विल बी शोन अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली. ओके. सो रिजर्व कैपिटल रिजर्व का ये डिफरेंस है, हम ये पढ़ लिया. And then we went to the next concept wherein we started and we understood subscription का ये वाला. तो मैं 10,000 शेयर्स इश्यू किया और 10,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, तो ये होता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. इसमें कुछ भी फर्क नहीं है. नॉर्मल क्वेश्चन से लेके आप उस शेयर्स को लेके यू कैन गो अहेड. बट वेयर देयर इज एन अंडर सब्सक्रिप्शन, इसका मीनिंग होता है कंपनी इश्यू किया है 10,000 शेयर्स पर मेरे को मिला है जस्ट 9,000 शेयर्स. तो आपको यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया चेक करना है. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, how much shares are being issued, 90% of the issued shares. कंपनी ने कुछ शेयर्स को इश्यू किया, उसमें 90% सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा. 90% सब्सक्राइब होने से ही आप क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, नहीं तो एग्जाम में एक नोट लिखना है कि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये सेटिस्फाई नहीं किया तो हम ये क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स को उसका मनी वापसी दे देना चाहिए. इज इट क्लियर? And then we were talking about the next important concept, which is the oversubscription. In this particular case, the company would have issued 10,000 shares, but it would have received excess shares, correct? It would have received excess shares. So what will happen in this case? Whenever you find an oversubscription in the question, you are supposed to check what is happening to the excess shares. So sometimes excess shares can be refunded or it can be accepted. Accepted is nothing but adjusted. Adjusted, we also call it as pro-rata allotment. Okay. So in the question, if you're finding there is a pro-rata allotment, adjust हुआ है, ये सब ये वाला meaning है कि excess को accept कर दिया company ने. Or the third thing can be a combination of 1 and 2. That means I can partially accept and partially reject. तो इसका accounting entry और effect क्या होता है, रिफंड करने का अमाउंट बैंक अकाउंट में दिखाई देनी चाहिए, एडजस्ट करने का अमाउंट द नेक्स्ट कॉल दैट इज शेयर अलॉटमेंट में आ जाता है. कॉम्बिनेशन होने से दोनों अकाउंट आता है. ओके. तो आई हैव एक्सप्लेन टू यू द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स आर बेसिकली 2-2. द मेन एंट्री इज ब्रोकन एज पर द इंस्टॉलमेंट्स इनटू 2-2.
For the application, the first is the receipt entry. Receipt entry ये होता है जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट होता है और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है. ट्रांसफर एंट्री में शेयर कैपिटल आता है. So it will be share application account debit to share capital. ये होता है application. फिर allotment call से which entry comes first? The transfer entry comes first. तो हम share allotment to share capital और नहीं तो हम ये वाला शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल. फिर आता है रिसिप्ट एंट्री. तो everybody don't raise your hands, I will come back to you, note down your doubts. 12 o'clock I will clear your doubts, Niranjana and Ishan. Okay, so when we have an excess shares, कहाँ पे ये इफेक्ट आता है? Everybody please remember, application entries में आता है. तो पहला एंट्री में, रिसिप्ट एंट्री में हमको we are supposed to take the higher number of shares into the application money. इस एंट्री में लिखना है. और ट्रांसफर एंट्री, in the transfer entry what are we supposed to do? It will be like this: share application account, okay, share application account data to share capital ABC entry. I told you about the ABC entry. Share capital to bank account to share allotment. It will come like this. As simple as this. That's all. Bank account, share capital to the share allotment. Okay. So here always share capital straight face value. Okay. The number of shares issued into the application money. What is bank? The amount that I refund. आपने कुछ अमाउंट रिफंड कर दिया शेयर होल्डर्स को, उस अमाउंट को आप इस बैंक अकाउंट के स्ट्रेट लिखना है. और शेयर अलॉटमेंट का मतलब ये है कि आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, यू हैव टेकन द एक्सेस मनी. तो कितना एक्सेस मनी आपने एडजस्ट कर दिया, ले लिया आपके पास, दैट यू हैव टू राइट इट अंडर शेयर अलॉटमेंट. ठीक है. तो व्हेन यू आर पासिंग द एक्चुअल शेयर अलॉटमेंट एंट्री, इसको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिसिप्ट एंट्री को पास करते हैं. तो इस फैशन में हमने देखा है इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 6, या इलस्ट्रेशन 6 हमने देखा है. इफ यू वुड हैव रीवर्क्ड इट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ओवर सब्सक्रिप्शन आने से कैसा हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, हाउ वी विल बी डूइंग. Over subscriptions, accounting effect is very simple. In the application entries, in 2 entries, you are going to do the thing. First entry is the receipt entry. Higher number of shares into application money, you should write in the first entry. Second entry is ABC entry. So it is a transfer entry. Okay. So share application to share capital to bank to share allotment. What will come in share capital? The face value into number of shares issued by the company, not higher number of shares, but the lower number of shares. Okay. The second is bank. The amount that you refund back to the shareholder should be written in this account. And share allotment, the amount that you have accepted and taken forward for the next installment will come here. Now we talk about the face value. Suppose 10 rupees is the face value. I issue 10 rupees at 10. No problem. No change in the accounting concept. 10 rupees, can I issue it at 9 rupees? No. Section 53 does not let me issue shares at a discount. Okay, SEBI has told technically any shares should not be issued at discount. Don't issue at discount. Okay. Now next we come when the company has really good popularity, it can issue it at a high price. So this excess price over the face value is called as premium. Now where will you show this premium? It is taken to a separate account called as the securities premium. Where is the effect of the securities premium? In the respective call, you should show it in the transfer entry along with the share capital. Usually in all the questions, somebody asked me yesterday, madam, will the question tell where the premium amount is taken? Yes, we have seen in so many illustrations that we have worked out. Mostly it is collected with the allotment money, correct? So whenever it is collected, I told you about the presentation. Suppose 10 plus, let us take 10 plus 2 is the value. This is 5, 3, 2. So this should match. And this you should write face value plus premium. Why, madam? Because this is taken to a separate account, securities premium. This is shown as the face value in the share capital account. This is taken to the securities premium account. Clear, everybody? This is the effect of it.
This is the effect of how you are supposed to pass an adjustment entry when you get the securities premium. And now this is governed by section 52. आपको ये section 52 पढ़ना है क्योंकि इसमें 5 uses है जिसको आप ये securities premium amount use कर सकते हैं. वो ऑर्डर में लिखा होगा. The first one is for the fully paid bonus shares. आप fully paid bonus shares issue कर सकते हो इस अमाउंट से, यानी आप कुछ सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो, उसमें आप इश्यू एक्सपेंसेस जैसे कि कुछ कमीशन दे रहे हो, एक डिस्काउंट दे रहे हो, वो सब आप ये वाला प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हैं. और जैसे आप इश्यू करते हो उसको रिडम्पशन करने के टाइम पे, लाइक यू आर इश्यूइंग द सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स, ऑन रिडम्पशन ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स यू कैन टेक द लाइक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल कम. ये तो हम यूनिट 5 एंड 6 में पढ़ेंगे ये क्या है, ये रिडम्पशन, व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. बट ये अभी समझो कि एक एक्सपेंस है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड दैट एक्सपेंस कैन बी टेकन फ्रॉम दिस अकाउंट. एंड फोर्थ होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस इनकर हो सकता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी आप इस अकाउंट से ले सकते हो. एंड फाइनली फॉर बाईबैक, आपका ओन सिक्योरिटीज आप मार्केट से बाईबैक करना चाहते हो, उसके लिए भी सेक्शन 52 का पैसे यूज कर सकते हो. ओके, सो फॉर इश्यूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, फॉर the expenses on the issue of securities debentures you can use this. For premium on redemption on securities and debentures you can use this amount. For writing of the preliminary expenses you can use it. And finally for the buyback of securities. तो ये हो सकता है आपका एक theory question, and this is about the premium. Okay, and then the next concept that we saw was, just give me a minute. Yeah. Yeah, please wait. Let me finish the concept and then come back. Immediately, you people are raising hands. I have not even taught the concept. Wait, I'm just revising. Okay. Then we have come to calls in arrears and calls in advance. Calls in arrears is nothing but when the company makes a call, some shareholders fail to pay the money. Correct? So it is a loss for the company. You are asking for money. Shareholders are not able to pay because they don't have cash or something. What is the effect of this, madam? So calls in arrears can happen only from allotment. Okay. So in whichever installment you are getting the calls in arrears, simple effect, it is a loss. Every loss has debit balance. So in the receipt entry, because when they give you money only, no, you understand whether the money is given or not. So it should come in the receipt entry. तो बैंक आप डेबिट करते हो, उसके नीचे कॉल्स इन अरियर्स को लिख देना, वो भी डेबिट हो जाता है. तो वॉट एवर आर द आई इंस्टॉलमेंट्स, शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल हो सकता है, शेयर सेकंड कॉल हो सकता है, कुछ भी. ओके, दिस इज द इफेक्ट. नाउ इसके साथ हम इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा. तो कॉल्स इन अरियर्स का डिफॉल्ट किसने किया? शेयर होल्डर्स ने किया. इट्स अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो वो कुछ समय के बाद when they are paying their actual installment, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा. कितना मैडम है इंटरेस्ट, कौन बताया है? टेबल एस, ये तो कंपनीज एक्ट में दिया है. कंपनीज एक्ट में टेबल एस के इंडिकेशन में आप पे करना है, यानी शेयर होल्डर्स कंपनी को पे करना है 10% इंटरेस्ट के साथ. तो आप अमाउंट है इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ्स के बाद वो पे कर रहे हैं, वो मंथ्स लेके डिवाइड बाई 12 करके आप ये वाला सॉल्व करना है. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट के लिए इलस्ट्रेशन 9 वर्कआउट किया. तो कॉल्स इन अरियर्स एक कॉन्सेप्ट है, उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस. ये वाला क्या है? द शेयर होल्डर हैज मोर मनी सो ही पेज यू इन एडवांस. तो अगला कॉल का मनी अभी इस कॉल के साथ ही वो पे कर रहा है, तो ये होता है आपका लायबिलिटी. तो इसको भी हम रिसिप्ट एंट्री, इस कॉल में हमको ये वाला एडवांस मिल रहा है, उस रेस्पेक्टिव कॉल का रिसिप्ट एंट्री में जाके हम ऐसा लिखनी चाहिए. तो हम ये फर्स्ट कॉल लेते हैं 2 calls in advance.
ठीक है. This is when you receive the money. Actual call, तो आप अभी सेकंड कॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसी की रिसिप्ट एंट्री में भी ये वाला एडवांस आपके पास से आपने क्रेडिट किया, तो अभी उस कॉल का पैसे आप मांग रहे हो, सो इतना पैसा वो नहीं देगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन गिवन टू यू. So what you are supposed to do in that respective accounting entry, you are supposed to debit the calls in advance. तो आपने पहला क्रेडिट किया, when you got the amount you credited in that call, and when the actual call is made you are debiting, so calls in advance account gets closed. Okay, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी देता है शेयर होल्डर का, बिकॉज शेयर होल्डर्स मनी इज विद द कंपनी, सो द कंपनी इज सपोज्ड टू पे टू द शेयर होल्डर. ओके, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? Table F has prescribed 12% interest rate for us. So everything is given to us in the table only. So the table F says calls in advance interest is at 12%, whereas for calls in arrears it is 10%. So we worked out the illustration 9. So in that the amount into 12% into the number of months. This number of months will be given to you in the question. Clear? So this much we have learned in the last class. Everybody okay? So now I will be starting a new concept. Very simple concept and the most important concept about the forfeiture. Okay, what is the meaning of forfeiture? Forfeiture होता है forfeit. Forfeit का मतलब है cancel. So what are we trying to cancel here? We are cancelling the shares. Why are we supposed to cancel the shares? The simple basic logic is we need money from the shares issued, correct? But there are few people who are not paying the money. So which account you would have showed them as? Calls in arrears. Okay. So there is a person who did not pay allotment money. There is a person, that person did not pay even the first call money also. So constantly I am not getting money from the shareholder. I have sent notices to him. I told company needs money and you are not giving me money in time. So what should I do? I've asked him. He has told me I don't have money. So the company has an option now. Even after giving due notices, if the shareholder is unable to pay, the company need not go at loss. So what it can do? The option is cancel the shares. That is the defaulting shareholder. From the defaulting shareholder, I will take back my shares and then I will do a reissue. Okay, when I issue for the second time, it's called reissue. तो मैं क्या कर सकती हूँ, कंपनी क्या कर सकता है? It will वो शेयर्स को शेयर होल्डर से ले लेता है वापस. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर यानी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. उस शेयर को लेके अपने पास रख के फिर उसको मनी कब चाहिए उस टाइम पे वो रीइश्यू कर देता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एंट्रीज. अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है फॉरफीचर का. इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल, where a shareholder is defaulting, shareholder money नहीं दे रहा है. So why should the company क्यों सफर होना है? तो कंपनी उसके शेयर्स को ले लेता है. तो फर्स्ट आता है forfeiture एंट्री. ओके, हम शेयर्स को इश्यू करने के टाइम पे वो सिंगल एंट्री मैंने बोला था ना, when you issue shares, the single foundation entry I told you, you receive money by issuing the shares, correct? So what did we do here? Bank account we debited because money is coming inside. Share capital is a liability because it is the investor's money. Liability always has a credit balance. So you are crediting the share capital. Fair enough? This is okay? Now when you come to forfeiture, you are taking back the shares. So share capital is reducing or increasing? Is it reducing or increasing? I think chat you have not enabled. Manju? Not Manju. Divya? Can you please enable the chat? Yeah, enable the chat so that these people will be able to type there. So what happens when you forfeit the shares? The share capital reduces. So liability gets reduced. So share capital should be debited. The first entry that you have to do is share capital gets debited in a forfeiture entry. Okay. Now what should you credit? Madam, I should credit two things, madam. Against these shares, that shareholder paid some amount, did not pay some amount. So I will be crediting the amount paid
and amount not paid. So you people tell me amount not paid was earlier debited to the calls in arrears. Now, when I take back the shares and close this account, calls in arrears should also be closed. So what will I do? Earlier मैंने calls in arrears को debit किया और अब okay मैंने debit किया और अब मैंने क्या किया? What did I do? For the calls in arrears, अब मैं उसको cancel कर रही हूँ. So I have to credit the calls in arrears. Clear? Now, madam, amount paid is there, no? Obviously, because a person or a shareholder is supposed to pay your particular value. Which value? Application money, at least he has to pay. तो उस वैल्यू मैंने रिसीव किया, उसको मैं किस अकाउंट में आई विल शो इट विल बी टेकन टू एन अकाउंट कॉल्ड एज शेयर्स forfeited account. तो शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू, कॉल्स इन अरियर्स जो होता है अमाउंट पे नहीं किया, और शेयर्स forfeited अकाउंट में शेयर होल्डर कौन सा अमाउंट पे कर रहा है, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल गो इनटू द शेयर्स forfeited अकाउंट. ये वाला क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? Forfeiture entry will be like this. Share capital gets debited. What is the logic? Because the shares are getting cancelled. The company is taking back its own shares. So the share capital comes back to the company, it reduces. So share capital debit. When you are cancelling a particular shareholder shares, on those shares he would have paid some money. That should be taken to the shares forfeited account. And the amount that's not paid should be taken to the calls in arrears account. On this particular concept, we will be now very quickly going ahead with the illustrations, right? Everybody with me? Don't write all of you, please. See, A Limited forfeited 30,000 equity shares, okay? इसके पास इसने forfeit किया है 30,000 equity shares at ₹10 का, okay? And held by Mr. X for the non-payment of final call of 4. He had paid application 2 and allotment money of 4. Please show the journal entry for the forfeiture. बहुत easy question है. ये है 10 rupees. 2, 4, 4. 10 हो गया. तो Mr. X who was holding 30,000 shares कितना पे किया, कितना पे नहीं किया? ये वाला पे नहीं किया. He has not paid the final call, but he has paid this value. Clear? Yes, उसने एप्लीकेशन मनी को पे कर दिया 2 rupees एंड अलॉटमेंट मनी को भी पे कर दिया, बट ओनली 4 rupees का वो लास्ट फाइनल कॉल था वो पे नहीं किया. तो नाउ दे आर आस्किंग यू टू पास द forfeiture entry. Shall we pass the forfeiture entry? ये होता है forfeiture entry. Now I am just going to write the amounts. Can somebody help me in writing the amounts? शेयर कैपिटल कितना शेयर्स मैंने forfeit किया? 30,000. शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू, करेक्ट? So 10 rupees यहाँ पे आ जाता है. So this comes to 3 lakh rupees. Correct? Everybody? Very good. Farheen, Chinmayi, very, very good. Now come here. Share forfeited account में what will you write? It is nothing but the amount paid. So how much amount is paid? First application 2 rupees is paid. Then this is also paid. So total paid is 6 rupees. 6 into 30,000, 1,80,000 is paid. Unpaid amount कितना है? Last call पे नहीं किया. तो 30,000 into 4, 1,20,000. आपको नरेशन ध्यान से लिखना है. Being 30,000 shares forfeited on non-payment of which call? Non-payment of which installment? Non-payment of the final call. ये वाला आप पूरा की पूरा you should write of the final call. Very good, Rishali, Farheen, and very happy everybody is trying. Very, very good. Clear है ये वाला? Sri Krishna, very good. What 30,000 you have written, Sri Krishna, where? What 30,000? 3 lakh है वो. This is 3 lakh, which is the face value. So this is illustration number 10. Clear? Yes. Now let us go ahead to the illustration number 11. Illustration number 11. Same forfeiture entry है, but small change है यहाँ पे. What is that small change, madam? Can you tell us? Yes, I will tell you. Please read this particular. Just rubbing whatever it is. Let us read the question first, okay? Read the question. X Limited forfeited 20,000 equity shares. All of you please see. X Limited के पास 20,000 shares में money नहीं आया तो उसको forfeit कर दिया.
ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दिस? शेयर्स ऑफ 10 rupees each, 8 rupees called up for the non-payment of the first call money of rupees 2 each. Application money 2 rupees, allotment money तो 4 rupees already received by the company. तो इसका मतलब ऐसा होता है. All of you please see, don't write. 8 rupees, 10 rupees है फेस वैल्यू, बट उसमें सिर्फ 8 rupees कॉल किया है कंपनी. दैट मीन्स लास्ट कॉल 2 rupees अभी तक कॉल नहीं किया है. करेक्ट? डिड यू कॉल दैट मनी? नो. When they say face value 10 rupees, 8 rupees called up यानी paid up, it means that company ने full 10 rupees नहीं मांगा है शेयर होल्डर से. अभी भी लास्ट फाइनल कॉल बाकी है. क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका इफेक्ट कैसा आता है इन द एंट्री आई विल शो यू. नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 4 2. करेक्ट? ये वाला 2 अभी तक कॉल नहीं हुआ है, तो ये वाला हमको क्वेश्चन में नहीं चाहिए. कितना कॉल हुआ है उसके वी विल टेक ओनली दैट. ओके? तो एप्लीकेशन मनी 2 rupees है, अलॉटमेंट मनी 4 rupees है, ये वाला 2 rupees है फर्स्ट कॉल का. इनमें से ओके दिस इज बीइंग कॉल्ड अप. which is paid, which is not paid for the non payment of first call. ये वाला पे नहीं हुआ है. तो now come here in this entry, all of you please see very very carefully. पूरा face value is not called up. Then what you should do? In the share capital, you should take the called up value. You should take up what value? Called up value. Why madam? क्योंकि लास्ट कॉल को कॉल ही नहीं किया, तो फेस वैल्यू क्या होता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल. ये वाला ऐड करके 8 rupees ही उसका फेस वैल्यू बन जाता है. प्लीज रिमेंबर वेरी क्लियरली. Forfeiture, this is also same, but only variation is full face value not called up. When full face value not called up, the face value becomes the called up value. इसमें से 10 और 8 whichever is less आपको लेना चाहिए. क्लियर? तो अभी शेयर कैपिटल के सामने मैं 20,000 into 8 लिख लिया. यहाँ पे मिलेगा 20,000. शेयर्स फॉरफिटेड में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? हाउ मच डिड द शेयर होल्डर पे? इट इज 2 plus 4, so 6 rupees is received. कॉल सिनेरियोस उसने लास्ट कॉल पे नहीं किया. 20,000 into 2 हो जाएगा. So 40,000, यहाँ पे 1,20,000. Did you understand? नरेशन होता है being 20,000 shares forfeited on the non payment of the first call. यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं है, ये तो है फर्स्ट कॉल. Is this clear everybody? Any doubts? Everybody who are able to answer? Yes, whenever called up value is lesser than the face value, please take up the called up value, because last call not made. Not made, you should not take. That's all. Very, very simple. Yes, everybody? Abhi next illustration we will see. Now the next illustration says, illustration number, correct. Now illustration number 12 needs a new concept. मैडम, मैंने शेयर्स को प्रीमियम में इश्यू किया. आई हैव इश्यूड द शेयर्स एट द प्रीमियम मैडम. ओके, दैट मीन्स 10 plus 2 rupees I have issued madam. 2 5 3 2. This is what I have done madam. Now see here, now if I am going to have calls in arrears in allotment, तो इसका मतलब क्या है? This 100 shares paid you the premium amount or not paid the premium amount? Paid you the premium amount or not paid the premium amount? What is the meaning? If I say allotment has 100 shares who have not paid the allotment money, it means that he has not paid the premium. ठीक है? Not paid the premium. So, my dear students, whenever in the question you are having a premium issued, इस तरह का क्वेश्चन है और कॉल्स इन अरियर्स आ गया है अलॉटमेंट में, तो इसका मतलब है वो शेयर होल्डर शेयर प्रीमियम अमाउंट भी नहीं पे किया. देन व्हाट विल हैपन टू माय अकाउंटिंग एंट्री? मैडम, इसमें कुछ फर्क आ जाएगा? यस, आएगा. कैसा आएगा मैडम? शेयर कैपिटल के साइड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना है. व्हाट यू शुड डू? You are supposed to debit the securities premium. But किस टाइम पे डेबिट करते हो? उसका कंडीशन क्या है? What is the condition for you to debit the securities premium? The condition is आपको thoroughly, carefully check करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के whether
प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, नहीं रिसीव होने से नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता, ओके आई पुटिंग 3 2, ओके इसमें है, तो मैं एक एग्जांपल दिया है -100 है, यहाँ अलॉटमेंट में आ गया। सो ये 100 वाला शेयर्स को सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है। एक और बताती हूँ, एक और पर्सन है उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, प्लीज सी, एक और पर्सन है इसी में उसने किस कॉल को पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल ही हैज नॉट पेड। ओके, so then you tell me here he has paid premium or not paid premium? He has paid premium or not paid premium? Me no, very good, correct, he has paid premium। तो इसका forfeiture entry, when you are passing forfeiture entry for 500 shares, it will be normal entry, securities premium you should not debit। So my dear students, based on the question you are supposed to understand premium receive हुआ या नहीं हुआ। प्रीमियम रिसीव होने से आपको नॉर्मल फोरफीचर एंट्री करना पड़ेगा। नॉर्मल फोरफीचर एंट्री का क्या मतलब है? नॉर्मल फोरफीचर एंट्री होता है शेयर कैपिटल टू शेयर्स फोरफीटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स, दैट्स ऑल। बट आपको क्वेश्चन पढ़ के प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला ये बात श्योर हुआ तो यू आर सपोज टू डेबिट द सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ये वाला सेम क्वेश्चन पे, एक पर्सन और एक शेयर होल्डर प्रीमियम नहीं पे किया होगा, एक शेयर होल्डर प्रीमियम पे किया होगा, तो the forfeiture entry will vary। Is this concept clear to everybody? Now based on this concept we are going to do the next question, which is the illustration number 12। Yes, all of you please see here, illustration 12। X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each fully paid। Okay, fully pay कर दिया और यहाँ कहा what is the problem? Issued at a premium of 20%। यहाँ आ गया issued at a premium। तो कैसा है? 20 on application, 50 on allotment, first and final call 50। Only application money was paid by the shareholders। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, 5,000 शेयर्स को फोरफिट किया है, इसका फेस वैल्यू था 100, 20% प्रीमियम ऑन 100 है 20 रुपीज। तो ये कैसा डिवाइड हुआ है? 20, 50 एंड 50। क्लियर? तो ये बन गया है टोटल 120, ये 120। नाउ ये 5,000 शेयर्स व्हाट डिड ही पे? उसने पे किया है सिर्फ एप्लीकेशन, ये दोनों पे नहीं किया। बट यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज राइट द ब्रैकेट्स, ये वाला। तो ये दोनों अमाउंट पे नहीं किया। तो अभी यू टेल मी प्रीमियम पे हुआ नहीं हुआ? Did the premium is being paid or not paid? Yes, premium is not paid। तो आप क्या करना है? The forfeiture entry what you should do? I should debit the securities premium। अब चलो let us write the values। So 500 share capital will always be the face value। How many shares you are forfeiting? 5,000 shares। So 5,000 into कितना है face value? 100। Very good, 5 lakhs। Very happy everybody is doing the sums। Very nice। Yes, now come down। ये वाला 5,000 शेयर्स में हाउ मच इज द प्रीमियम अमाउंट? 20 है प्रीमियम अमाउंट, तो ये होता है 1 लाख। क्लियर? 5 lakhs है एंड 1 लाख। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, शेयर्स फोरफिटेड है क्या? शेयर्स फोरफिटेड का मतलब है हाउ मच इज बीइंग पेड। तो ये शेयर्स फोरफिटेड 5,000 शेयर्स है, उसमें पे किया है 20 रुपीज। सो ये आता है 1 लाख का। writing it very side, no, I write it here। ये आता है 1 लाख का। This is 1 लाख। अभी बोलो कॉल्स एंड अरियर्स कितना है? He has not paid 2 calls, वो है अलॉटमेंट का 50 और इसका 50। सो 50 प्लस 50 कितना होता है? 5,000 into 100 होता है। अगेन 5 lakhs यहाँ पे आ जाता है। Being 5,000 shares forfeited on the non-payment of allotment plus call, ये होता है नरेशन। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस। आपको क्वेश्चन में प्रीमियम है तो आप सेपरेट ऑल्सो वी कैन राइट व्हाट सेपरेट, या वेरी गुड। ये वाला बात ऑल ऑफ यू प्लीज सी, ये वाला कॉल्स एंड अरियर्स आपको हुआ है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इन बोथ द कॉल्स यू आर हैविंग द कॉल्स एंड अरियर्स। सो समटाइम्स in the question, no, instead of writing it in one calls and arrears account,
दे विल जस्ट क्रेडिट, ऐसा ऐसा भी क्रेडिट कर सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। और फिर मेरे कॉल सिनेरियोस है फर्स्ट कॉल पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होता है, अगेन 2,50,000 आता है। तो आप ऐसा यू कैन ब्रेक इट एंड शो इट अकाउंट वाइज ऑल्सो, और नहीं तो कंबाइन करके कॉल सिनेरियोस में फुल टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो, एनीथिंग इज ओके। 5,000 into 50. Clear everybody? Yeah. Do you have any doubt? So question में प्रीमियम आने से आपको what you should do carefully, you should read and understand whether the premium amount is paid or not paid. पे किया है तो securities premium को don't debit. If not paid, you are supposed to debit the securities premium. Clear everybody? Now let us go to the next illustration. Okay, I will go to the illustration of. Okay. तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देती हूँ। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, आपको फोरफीचर एंट्री समझ में आ गया, करेक्ट ना? फोरफीचर एंट्री है, व्हाट इज द बेसिक फोरफीचर एंट्री माय डियर स्टूडेंट्स? वंस अगेन प्लीज टेल इट टू योरसेल्फ। शेयर कैपिटल अकाउंट वी विल डेबिट, और क्रेडिट करेंगे, वी विल क्रेडिट शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट। फोरफीटेड अकाउंट का मतलब है कितना, हाउ मच वी हैव रिसीव्ड, दैट विल गो टू द शेयर्स फोरफीटेड। और कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट है, हाउ मच वी हैव नॉट रिसीव्ड, ये इससे हम ये क्रेडिट करते हैं। दिस इज ओके? यस। नाउ दिस कॉल्स एंड अरियर्स आल्सो यू कैन राइट इट अंडर इंस्टॉलमेंट्स। आपको किस कॉल नहीं मिला उस अकाउंट को भी आप क्रेडिट कर सकते हैं कॉल्स एंड अरियर्स के बिना। दिस आल्सो यू कैन डू। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आता है? व्हेन विल द सिक्योरिटीज प्रीमियम कम? ओनली व्हेन यू हैव नॉट रिसीव्ड इट, शेयर होल्डर ने नहीं पे किया तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। ये वाला समझ में आ गया? अभी क्या हुआ, फोरफीचर कर दिया, कंपनी हैज टेकन इट्स ओन शेयर्स, बट व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग शेयर्स? बाय शेयर्स द कंपनी शुड रिसीव मनी। एक शेयर होल्डर ने नहीं पे किया तो क्या हुआ, मैं शेयर्स को लेके किसी और को, दूसरे को मैं रीइश्यू कर सकती हूँ। ये सेकेंड टाइम इश्यू हो रहा है तो हम इसको रीइश्यू बोलते हैं। फर्स्ट टाइम हम इश्यू करने से उसको केवल सिर्फ इश्यू बोलते हैं, सेकेंड टाइम व्हेन यू डू दैट इट इज कॉल्ड एज रीइश्यू। Is this clear everybody? Now my dear students, please see what is the issue entry. Issue entry का मतलब क्या है? आप shares को issue करके if you are getting money from that, what is the single entry I told all of you in the starting class, last class I told you, when you issue shares and get money from that, it is called as, or the entry is bank account to share capital. क्या है entry? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, वन सिंगल फॉर्मेट, स्टैंडर्ड एंट्री। यहाँ पे यू कैन आस्क मी मैडम अगेन इंस्टॉलमेंट आएगा? नहीं, रीइश्यू के टाइम पे कुछ इंस्टॉलमेंट्स नहीं आएगा, सीधा एक ही अमाउंट में रीइश्यू हो जाता है। इज दैट क्लियर? देयर आर नो इंस्टॉलमेंट्स व्हेन द कंपनी इज डूइंग द रीइश्यू, सो द एंटायर फेस वैल्यू विल बी गिवन और इट विल बी कलेक्टेड एट वन इंस्टॉलमेंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ when the shares are issued for the second time, they need not be issued at the face value because it is a second hand share, correct? When I purchase a bicycle today and I want to sell it tomorrow, will I sell it at the same value I purchased? No, I purchased for 1,000, but people are saying this is second hand cycle. No, then I will take only for 500. There is a reduction in the value, correct? Same thing happens with the shares also. To the first person, I issued it at 10. From him, I took back the shares. I am issuing to the second person. I can issue it, or sometimes, or most of the times, I can do it at a lower value. You can also call this as discount. Madam, you told me no discount. No discount on the original issue. But for the reissue, I can issue it at a lesser value only. So the discount is a loss to the company. Correct? When I issue it at a lesser value, who faces the loss? Company faces the loss. It is not like a discount, Rushali. Exactly, it is like a reduction in the value. हमने तो वो reduction in the value ही उसको समझना है. But in the textbook, when you are reading the question, they will say or use the word discount. तो वो डिस्काउंट भी हो सकता है, यानी उसका एक्चुअल नेचर है लॉस है वो कंपनी का, ठीक है? इट इज अ लॉस टू द कंपनी. कैन यू प्लीज रिमूव जानवी बी? ओके, स्टार्टेड ऑल नॉनसेंस कमेंट्स. ओके, सो या प्लीज कम हियर. सो ये डिस्काउंट भी हो सकता है. तो दिस इज अ लॉस टू द कंपनी, बट द लॉस हैज कम
Due to whom? Due to this defaulting shareholder. So the shareholder has the responsibility to give the money. But can he give the money now? No, he cannot give the money. That is why you are cancelling his shares. So what I can do? This loss is because of that shareholder. So whatever amount he has already paid, from that I will take the loss. So when you, in the forfeiture, when you are going to credit the shares forfeited, in the reissue entry, you should debit the shares forfeited account. You should debit the shares forfeited account. Kyun? Why? What is the logic? This loss of issuing at a discount or a lesser value has occurred due to this particular shareholder. So now he cannot give the money, but already he had paid and we have taken it to shares forfeited. So from the shares forfeited, I am going to make good the loss, take the money from here. So let me say he has paid 3 rupees. Okay. My dear students, please see, he has paid 3 rupees. You have taken the shares and you have reissued the shares and the loss comes to 1 rupee. Kitna hai loss? 1 rupee hai. Kitna mila hai? 3 rupees hai. So now the shares are cancelled and then shares reissued ho gaya. Now the balance in the securities premium ko aap check karna padega. What you should do? You have to check. Yes, correct. Yes, Rushali. So you have to check. Maine 3 rupees. I have taken 3 rupees, but my loss is only 1 rupee. So 3 minus 1, 2 rupees is a profit for the company. Correct? Excess इस transaction के वजह से आपको excess 2 rupees आपके हाथ में है, मिल गया. That is a profit. तो final entry आएगा. ये forfeiture है, ये reissue है. Final entry आएगा इस capital profit का. मैंने अभी बोला कैपिटल प्रॉफिट्स को किस अकाउंट में हम लेके जाते हैं? Which account do we take the capital profits to? We take it to a separate account called as capital reserve. From which account it goes? Shares forfeited में बैलेंस है बाकी 2 rupees. बट ये होता है कैपिटल प्रॉफिट कंपनी को, क्योंकि हमने शेयर्स को कैंसिल करके उसको रीइश्यू कर दिया, हो गया, फिनिश. तो ये वाला प्रॉफिट अभी मैं रिजर्व को ट्रांसफर करना है. क्लियर? कैसा उसको कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू? वेरी इजी. शेयर्स फॉरफिटेड क्रेडिट माइनस शेयर्स फॉरफिटेड डेबिट करके ये वाला एंट्री को पास करते हैं. नरेशंस लिखना है. ये वाला रीइश्यू का नरेशन होता है बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट सो एंड सो वैल्यू. क्लियर? और ये होता है बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व. बस. क्लियर? तो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन which is forfeiture as well as the reissue. ये वाला illustration 13 को थोड़े देर के बाद I'll come back. Forfeiture or reissue of forfeited shares. Clear? Yes. Now please see all of you the 14 shares. Very, very interesting. Okay. The questions of this type only will be coming to you in the exam. So please very, very carefully listen to the question. Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares. So preference shares, यानी equity shares, both of them, if they don't pay, you can do the forfeiture. तो आपको अभी डाउट नहीं आएगा, कल डाउट आएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया है, मैं forfeit कर सकते हूँ या नहीं. forfeiture कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स का भी. So Mr. Long, who was holding 2000 preference shares at the rate of 100 each, on which 75 has been called up. तो called up value क्या है इस क्वेश्चन पे? 75. तो आपका फेस वैल्यू कैसा बदल जाएगा? 75 में बदल जाएगा. इज इट ओके? 25 रुपीज आपने कॉल नहीं किया, हमने ये वाला इलस्ट्रेशन देखा है. सेम थिंग हैज कम हियर. ओके. 75 rupees has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 rupees. Clear? तो क्या हुआ है? ये 75 rupees ऐसा हुआ है कि 25 है एप्लीकेशन, 25 है अलॉटमेंट, 25 है फर्स्ट कॉल. करेक्ट? फाइनल कॉल नहीं कॉल किया है तो 75 आ रहा है. हाउ मच इज नॉट बीइंग पेड? नॉट बीइंग पेड है अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे किया. तो अभी पढ़ो. Directors forfeited the above shares and reissued 1500 shares to Mr. Short at 65 per share at 75 rupees paid up. तो यहाँ आ रहा है very important concept. मैंने फर्स्ट शेयर्स लिखा है, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है,
100 रुपीज का फेस वैल्यू है बट कॉल अप किया है 75। 75 का ब्रेकअप है, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 25, टोटल है 75 रुपीज। इसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ है, इसके कारण उसने फोरफीट कर दिया है। कितना शेयर्स? 2000 शेयर्स को फोरफीट किया है। पर रीइश्यू का कुछ ही अलग कंडीशन है। रीइश्यू किया है जस्ट 1500 शेयर्स रीइश्यू किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैडम 2000 shares I cancelled but I issued only 1500. Can I do like that? Yes, you can do. Based on the amount required by the company can reissue full shares 2000 or it can think now I don't want full money so partly I will reissue। तो इसमें से एक पार्ट को मैं रीइश्यू करके दूसरी पार्ट को होल्ड कर देती हूँ। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट नाउ लेट अस पास द फोर फीचर एंट्री। कैन यू पीपल टेल मी क्या आएगा फोर फीचर एंट्री में? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। आई विल डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट द शेयर्स forfeited अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। ये वाला क्लियर है? अभी टेल मी, शुड आई टेक सिक्योरिटीज प्रीमियम? ओके ओके, गरिमा विक्रांत सिंह को भी रिमूव कर दो। somebody called गरिमा विक्रांत सिंह, please remove them from the class। coming here, share capital I will debit and I will credit shares forfeited to calls in arrears। ये वाला clear है? Should I debit securities premium? You people tell me. Yes, because question may no securities premium, no problem. Now you people tell me how many shares are getting forfeited? 2000 shares are getting forfeited. Very good. Now you tell me what is the value I should multiply here? Share capital is the face value. What I should multiply here? No, Monu Kumar, not 50. How much I should multiply? Meenu, Vivek, Sunil, very good. 75 rupees I should multiply because ये है face value. But in the question where it is not fully called up, this called up value will become the face value. Very good. तो कितना आएगा? What is the value? 1,50,000. Monu Kumar, I think you told me calls and arrears का value. Correct? Now come to shares forfeited. How much he has paid? He has paid only 25. तो ये होता है 2000 into 25. How much ma? 50,000 he has paid. कितना पे नहीं किया है? 25 plus 25, 50 rupees नहीं पे किया है, उसका वैल्यू है 1 lakh. What is the narration? BA 2000 preference shares forfeited on non-payment of allotment and call money. Correct? ये वाला होता है आपका। Yes, very good. Now come to reissue, my dear students। अभी reissue होता है। What is the entry? Reissue का entry क्या है? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये तो स्टैंडर्ड एंट्री है। Yes, I have reissued only partly। इसको बोलते हैं partly reissue हुआ है। Now, all of you please see the question. Let us see the question once again। मैंने उस last part को नहीं दिखाया। I'll just show you now। All of you please see, Mr. Short, the long shares have been forfeited and it is reissued to Mr. Short at 65 per share, paid up as 75. इसका मतलब क्या है? 75 rupees is the face value, but did you issue it at 75? No, I issued it at 65. So what is the loss? 10 rupees is the loss. It is due to which person? The defaulting shareholder. So where will I take that loss from? I will take it from the shares forfeited account. Super, very good. Now all of you please see the share capital face value. How many shares I am reissuing? 1500 shares into 75. I will get 1,12,500. 1,12,500 shares. How much is the bank? I am issuing it at 65 rupees. So it comes to 97,500. And here 1,510 rupees मेरा loss, which is 15,000. ये वाला हो गया। BA only 1,500 shares reissued at 65 rupees. Clear? Being reissued at 65 rupees. Abhi, what I am supposed to do? I am supposed to pass the third entry, which is the
which is the normal capital reserve entry. तो क्या करना है? Shares forfeited account to कैपिटल रिजर्व। तो मैं अभी क्या करना है? 50,000 है क्रेडिट में, 15,000 है डेबिट में, इज आई हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू एंड कैन आई राइट इट हियर 35,000 डायरेक्टली? शैल आई राइट 35,000 हियर? इज दिस करेक्ट एवरीबॉडी? इज दिस करेक्ट? Rushali says no, Manjunath says no, Partha, everybody says no, correct? हाँ वही, because my dear students, you people are very sharp. I forfeited just 2,000 shares, but I reissued fully. If I reissue fully, this minus this, question over, khatam. But here it is just reissued partly, so 1,500 shares. You need to convert it. That means this 50,000 is for 2,000 shares. You need to convert that. So the 50,000 total shares forfeited value है, but this is for 2,000 shares. I need only for 1,500 shares. So कितना आएगा यहाँ पे? How much is the total? Can somebody tell me? This value 2,000 is 25. 25 into 15. So how much is this? Everybody, 22,500, right? No, 25 into 15 is 15 to 5 2s are 10, 12, 125, 25. 37,500 it comes to. ये होता है 37,500, okay? This is 37,500. Everybody, you worked it out. The 50,000 becomes what? It becomes 37,500. So abhi, what I will be doing is 37,500 minus 15,000 hai. So this 22,500 will be the value of the capital reserve. So narration being the capital profit transferred. Okay, being the capital profit transferred. So did you understand? Very easy. You people have told me. I am very happy. So you have forfeited 2,000 shares, but you have just returned reissue 1,500 shares. Okay, you have returned just reissue 1,500. So before you transfer or pass this entry, आपको करना पड़ेगा ये वर्किंग नोट. वर्किंग नोट क्या है? 50,000 है, 2,000 shares का shares forfeited amount, but I want only the amount for 1,500 shares, which is nothing but 37,500. तो अभी मिला है 37,500, उसमें से I will deduct this 15,000 and show it here. So my dear students, still can you see out of 50,000, 37,500 ही exhaust हुआ है. तो फिर इसमें बैलेंस कितना है? अभी भी वो 500 शेयर्स किसको हमने रीइश्यू नहीं किया, उसका बैलेंस है 12,500. तो ये कंपनी कब उसको रीइश्यू करेगा? उस टाइम पे इस एंट्री को आप क्या करना है? ये 12,500 माइनस लॉस करके इस एंट्री को पास करना है. Till the time it is being reissued, it is not reissued. This 12,500 will be shown in the balance sheet under shares forfeited 12,500. Clear? This thing is clear? People who are trying to disturb the particular class now by writing all unnecessary and unwanted messages. I've seen so many people like you, so I don't care. Keep writing. All you can do is write only. Please go ahead and do. People who are listening to the class, I'm happy for them. And I will continue taking the class. That's it. Simple. So all of you, this one is okay? Yes? So coming back, this is your illustration number 14. Illustration 13, I will take a little later. Illustration 14 is done. Now, my dear students, please see the next illustration which we are going to do has a little bit, okay, little bit challenging here, which is the illustration number, okay, issued 30,000 shares, holding, now we are going to see illustration number 15. Let us see illustration 16 first. Let us see the illustration 16 and then we will come back to illustration number 15. Okay. So first may illustration okay, done.
Okay, Vanita, madam, 1,500 into 25 will also be that. Shall we take that directly, ma'am? Yes, you can take, ma'am, no problem. Also, you can do this, also you can do. Okay. Okay, good. Please remove Rihanna from the class. The next question is illustration number 16. All of you please see here, there are three people, okay? There are three shareholders. Illustration 16 में three shareholders हैं. A holds 2,000 shares. My dear students, I will write for the benefit. The shares held by A is 2,000. And what happened? Now we have application money, allotment money, and first call money, okay? Application, allotment, and first call. So application, allotment, first call, and final call. There are four things. Okay. So I am writing it like this. I will just show you how I am writing. So please see what it is. So I am just writing the shares. Application, allotment, first call, final call. Application का value है. He has paid. Application value is 2. Allotment is 3. And then first call is 3. And this is 2. So ये इसका total होता है 10. Like this it is written. Okay. So now let us read the question. A holds 2,000 shares, B holds 4,000 shares, and C holds 3,000 shares. Now let us see उसने किस-किसने what, which are the calls paid by them and not paid by them. Okay. So now I will share the screen and everybody please see. Mr. A has paid the application money but not paid anything else. So allotment नहीं pay किया, first call नहीं pay किया, final call नहीं pay किया. Now B has paid. B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid application money and allotment money. First call pay nahi kiya, final call pay nahi kiya. And then what happened? The last person, C, 3,000 shares of rupees 10 each has paid application, allotment, first call. Application, allotment, first call. He has not paid the last call money. They all failed to pay their arrears. These shares are reissued. These shares are reissued at 12 rupees per share fully paid up. Clear hai? Okay, now all these shares, the total shares are coming to 9,000. So these 9,000 shares reissue कर दिया पूरा का पूरा कितने पे 12 rupees पे 10 rupees value 12 rupees का madam. You told me it will always go at a lesser value madam. Not required. If the company has got very good name, second time even you are issuing, people will be ready to take it at a higher price. So what will happen? That we will see when we do the reissue entry. So first can we pass the forfeiture entry pass करते हैं? What is the forfeiture entry? Can somebody tell me? Share capital account debit. Share capital account debit to shares forfeited account. Correct? Two call scenarios. One thing is you can write call scenarios लिख सकते हो, but here there are multiple call scenarios. So we will write directly based on the installment. Okay? So allotment first we will write. Then we will write to share first call लिखेंगे. We will write share first call account to share final call. Clear everybody? तो अभी हम देखते हैं how we are going to do this question. Okay, very good. अच्छा, account लिख लिया. Forfeiture entry. Securities premium will come in this question. Everybody tell me. Will we get securities premium in the question? No, there is no securities premium. Good. So now share capital के straight. What I will be writing? 9,000 shares. The face value is 10. Fully called up. किसी भी कॉल पेंडिंग नहीं है, सब कुछ कॉल कर दिया. सो 10 rupees ओवर. नाउ शेयर्स फॉरफीटेड. प्लीज कम टू द वर्किंग नोट. शेयर्स फॉरफीटेड में ए का कितना शेयर्स है? 2,000 है. उसने पे किया है एप्लीकेशन मनी, तो 4,000 होता है ए का शेयर. बी का शेयर क्या है? 4,000 शेयर्स है, उसने पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. सो 2 + 3 होता है 5. So 4,000 into 5 होता है 20,000. अभी C ने क्या क्या पे किया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल. 2 + 3 + 3. So 2 + 3 + 3 क्या होता है? 8 rupees. Here it is 3,000 shares है. 24,000. तो कितना हुआ है टोटल?
48,000 मेरे को पेमेंट मिल गया, तो मैं इस तीनों शेयर्स को कंबाइन करके एक ही अकाउंट में लिख रही हूँ 48,000. Is this clear, everybody? 48,000 is clear to everybody? Any doubts you people have? 48,000. Good. Now let us see what is the particular failure. Is this clear? So allotment, who has not paid? Only A has not paid. In allotment, the calls in arrears is only of A. A has 2,000 shares and he did not pay the allotment money of 3. So how much will come here? 6,000 rupees straight to allotment. Why, madam? Only A has not paid the allotment money of 3. 2,000 into 3 will be 6,000. That's it. Clear? Ho gaya? Yes. Now coming back to this particular B person. All of you please see. B person, what happened is, okay, the B person, what has happened is, all of you please see, he has not paid what and what? He has not paid this. Okay. This 3 and 2 rupees he has not paid. So how much is the value? 3 plus 2, 5. How much shares he is holding? 4,000 into, okay, sorry. It is not like that. Now when I come to the first call, I was slightly disturbed by all stupid messages. Okay, slightly when I come to this first call, what has happened? Who has not paid? A has not paid, B has not paid. Correct? So A share is 2,000 into 3. B share is 4,000 into 3. Correct? So इसका total कितना हुआ? 6,000 plus 12,000. 18,000 is first call, calls in arrears. Is this clear? फर्स्ट कॉल में ये पे नहीं किया, बी भी पे नहीं किया, सो आई एम एडिंग 2,000 प्लस 4,000 is 6,000. 6,000 into 3, 18,000 is the calls in arrears. Okay, clear? अभी देखो फाइनल कॉल, ऑल द थ्री, तीनों पे नहीं किया, तो टोटल क्या है? 2,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, 9,000. ये वाला है फाइनल कॉल का कॉल्स इन अरियर्स. 9,000 into 2 rupees, 18,000. तो यहाँ पे आ गया 18,000 अगेन. क्लियर? अभी आपका बैलेंस टैली हो रहा है. आर यू एबल टू टैली द थिंग? इज इट गेटिंग टैलीड? 18,000 plus 18,000 is 36. 42 plus 48, 90,000. डेबिट टैलीज विद द क्रेडिट. ये बात आपको अलग से वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 में लिखना है. ये है शेयर्स फॉरफीटेड का अमाउंट, ऐसा कैलकुलेट किया है. ये है कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट. दोनों को वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 में आप लिखना पड़ेगा. फाइनल कॉल मेरा प्लेस नहीं है, सो आई हैव टेकन इट हियर. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सिंपल क्वेश्चन. A, B, C. A has not paid some calls, he has paid some calls. B has not paid some calls, he has paid. C has not paid, this guy has paid. The upper column amounts is this 2, 3, 3 to 10. Okay. Ma'am finally explained. Okay, I will explain. Please see here forfeiture. A person A has 2,000 shares. He paid only application money. Okay, he paid only application money. Allotment first call, final call, nahi, not paid. 4,000 person is holding B. He paid the first two things. Application, allotment pay hua hai. These two he has not paid. Now come to C. C is holding 3,000 shares. These three things he has paid, but he has not paid the final call. Okay, now we are supposed to pass the forfeiture entry. Yes, 9,000 shares forfeited is the narration. Chinmay, very good. Please write. Abhi forfeiture entry ke liye, what is the entry? You tell me. Vivek Sharma, share capital account debit to shares forfeited to calls in arrears. आप एक ही टाइम पे calls in arrears लिख सकते हो, but in this question I wantedly showed it as 3 accounts: allotment, first call, final call. इसका मतलब भी वो calls in arrears ही है. Is it okay? क्यों मैडम आपने डिवाइड करके ऐसा लिख लिया इस वाला प्रेजेंटेशन? बिकॉज इस क्वेश्चन पे बहुत सारा पेड अनपेड है, इसलिए आई हैव टेकन इट सेपरेटली. क्लियर? विवेक, आर यू लिसनिंग? तो शेयर्स फॉरफीटेड है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया. ये ने पे किया है एप्लीकेशन, सो 2,000 into 2 rupees उसने पे किया है, और बी पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. 3 plus 2,
5 रुपीज पे किया है इंटू 4000, so 20,000 मिल गया। सी पे किया है, सी हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, द टोटल कम्स टू 2 + 3 + 2 which is 8 rupees, so 24। तो टोटल अमाउंट पे किया है इन तीनों शेयर होल्डर्स मिलके, ओके Okay, who was the Vivek Rai? I'm sorry, Sharma. Vivek Sharma, Vivek Rai has asked. So 48,000 है इसका total. Clear everybody? Now we are coming to calls and arrears. Share allotment में कौन सा वाला पे नहीं किया? सिर्फ A पे नहीं किया. Only A has not paid. So A 2,000 into 3 comes to 6,000. That is share allotment. Share first call में ये B दोनों पे नहीं किया. So 2,000 plus 4,000 into 3. It is 18,000. I have written it here. And finally, final call, all the three have not paid. 2 + 4 + 3, 9. 9 into 2 is 18,000. Is this clear? Now we are going to the reissue entry. Very, very important. The question is not over yet. What is this? Madam, reissue you should do no. Yes. Can you people tell me the reissue entry? What will be the reissue entry? It will be bank account debit to share capital. This is the normal entry. And if you have a loss, you should write shares forfeited. Correct? But always make it a practice. Loss hai ya nahi hai. Please write shares forfeited. Okay. Now, my dear students, the entire shares of 9,000 of rupees 10, that is 90,000, have been reissued at kitna value? 12 rupees. So 1,08,000 you have received, but face value 90,000. No loss. Put a 0. Now, what is this? Extra 18,000, that is 2 rupees, is nothing but the securities premium. That's all. What is the 2 rupees? Nothing but the securities premium. So, being 9,000 shares reissued at the premium, that is 12 rupees. 10 rupees shares are issued at 12. So, this 2 rupees is again premium. Here everybody, premium. Now what is the last entry? Capital reserve entry. Shares forfeited account debit to share to capital reserve. Kitna hai amount? Can somebody tell me how much will I take to the capital reserve? How much I will take to the capital reserve? How much should I take to the capital reserve? Exactly, Rushali, correct. I want others me know the total value. Very good. What is the total, madam? 48,000 I received, madam. No loss, madam. All the shares are reissued, madam. So the entire value of 48,000 I will take it to the capital reserve, being amount transferred or amount of capital profit transferred to capital reserve. That's all. Clear? Yes, any doubts till now? Do you have any doubts? So what I will be doing is, it's 12:12. I will give you a 5-minute break. Okay. So please ask me all your doubts so that we can go ahead with the remaining things. So now you people can raise your hands and you people can ask me. I will answer your doubts. Okay. Any doubts till now? Okay. The people who raised in the first one. The moment you see my face when I am starting the class, you raise your doubts, no? So those people, please tell me what are your doubts? Okay, Sunil ji, I unmuted you. Please tell me. हाँ मैडम, व्हाट आई एम सेइंग, ये रीइश्यू में हमको प्रॉफिट हुआ, अगर रीइश्यू में लॉस होता है तो फिर क्या करना है? क्या करना है? अभी शेयर्स फोरफिटेड में आप वो अमाउंट को लिख देते हैं, वो लॉस आ जाता है। सो फ्रॉम 48,000 यू विल सबट्रैक्ट दिस, ये वाला अमाउंट आपको कम हो जाएगा। अच्छा, लॉस वाला कौन से अकाउंट से जाएगा? शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट से जाएगा, क्योंकि शेयर शेयर्स फोरफिटेड है आपके पास, वो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने कुछ पे किया है, उसको आप शेयर्स फोरफिटेड में दिखाते हो, करेक्ट? अभी ये ठीक, रीइश्यू करने के टाइम पे इस अकाउंट से भी आपको वो लॉस लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है, राइट ओके राइट राइट। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? No doubts? Ashay?
Who's this? Yeah, hello. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, if there is a loss, then goodwill account it will be not transferred. You're in which chapter, you know? This chapter only capital reserve in place of capital reserve goodwill account it will not come. No, it will not come. You cannot reissue it at a loss at all. You should not do that. What is the doubt that he has asked is, come here, come back. Shares forfeited, he says 48,000, madam. What if my loss is more than 48,000? No, it cannot be more. Okay. Okay. Next. Vivek Rai, did you understand? I'll have water 5 minutes. Huh? Okay, you don't have any doubts now, so I'm going ahead with the next concept. I also don't want to waste time. Okay. I'm muted. Why am muted? Okay. I'm back. Everybody able to listen to me? Yeah. So we have another 3 illustrations to be done, which is first I will be doing illustration number 15. Okay. And then I will be doing the illustration number 13 and illustration 7. With that, we have completed. One more illustration for 17. Okay. Quite easy questions only. Do illustration number 15. Let us read the question. All of you please see here. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of rupees 10 each payable as 3 rupees per share on application, rupees 5 including premium on allotment, and rupees 4 per share on the call value. So it is 354. Okay. And then the shares, all the shares were subscribed. Money due on all shares was received except for from Ram, who was holding 500 shares, failed to pay the allotment money, call money. And Shyam holding 1,000 shares failed to pay the call money. All those shares of 1,000, all those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, only 1,250 shares were reissued to Jadu as fully paid at a discount of rupees 2 per share. They are asking you to pass the necessary journal entries to record the forfeiture and reissue. But I would request you to do the entire question. Okay. This is one question that is testing us from the beginning. Shall we continue doing it from the beginning and check it out? Very good. 30,000 shares at the rate of 10 plus 2 premium. It is paid as 543. Here, premium is collected with the allotment. Am I right? So, 12 matched with 12. Now, with this, all the shares have been subscribed. So, normal subscription 30,000 shares issue किया, 30,000 shares subscribe हुआ, normal subscription है, कुछ भी problem नहीं है. And here it is issued at a premium. तो securities premium आएगा question पे. Then we have राम श्याम, दोनों के बारे में बताया है. तो राम ने 500 shares hold किया है, उसने नहीं पे किया है allotment और first call. और एक और पर्सन है श्याम, उसने नहीं पे किया है जस्ट फर्स्ट कॉल मनी. ओके. तो यहाँ पे आपको क्या concept should come into your mind, my dear students? The concept should come into your mind stating that for Ram, premium amount नहीं receive हुआ, for Shyam, premium amount receive हो गया. So while you are passing the forfeiture entries, you people should be really careful. This is false in arrears only. So can we start doing the question as such? Yes. From the beginning, we are going to do the question. I want all of you to listen very carefully. If you want, you can work out, but please concentrate. In the books of journal entry, I will not be writing the narration because for the want of place, but you people, please write the narration. Oh, I turned the board completely. Okay, now let me turn the board this side. So we have the date column, then we have the particulars, then we have the debit and credit. 90,000 into 3 कितना हुआ है? 90,000 and 90,000.
नरेशन है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। क्लियर है? ये है फर्स्ट एंट्री, ये है रिसिप्ट एंट्री है एप्लीकेशन का। नेक्स्ट विल बी द ट्रांसफर एंट्री, ये होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी इजी, ट्रांसफर कर रही हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो दैट, नो दिस, नथिंग, नो कंफ्यूजन, फिनिश। सो बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड। क्लियर है ये वाला? क्लियर? The board is getting a little blurred, but don't worry, it will come back to the main position. You people can see. So first is the receipt entry, next is the transfer entry. तो अभी मैं आ रही हूँ थर्ड एंट्री का, इट इज फॉर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में फर्स्ट आएगा विच एंट्री? ट्रांसफर एंट्री आएगा। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। करेक्ट? शेयर कैपिटल है, गुड। नाउ कितना है? नाउ प्लीज सी क्वेश्चन में क्या है? प्रीमियम इज ऑल्सो देयर इन द क्वेश्चन, यस और नो? तो प्रीमियम है से व्हाट यू शुड डू? आई शुड क्रेडिट द सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों मैडम? अलॉटमेंट में यू आर क्रेडिटिंग इट बिकॉज प्रीमियम कलेक्टेड एट अलॉटमेंट, so I have to credit the securities premium also. Clear, my dear students? Now you people tell me what is the amount? 30,000 into 5, that is 1,50,000. I should write directly to allotment. Share capital में face value कितना है? Just 3 rupees. So 30,000 into 3 होता है 90,000. Securities premium होता है 2 rupees. 30,000 into 2, 60,000 rupees will come. Yes, 30,000 into 2, 60,000 will come. तो इसका होता है being amount transferred. Simple. Being amount transferred. ये हुआ है, ये हो गया है. The next set of journal entries I will be writing. The camera will let me switch. The next set of journal entries: date, particulars, debit, credit. Okay. So the next entry after this will be what? The receipt entry आएगा अभी. Receipt entry में what you should be careful. यहाँ calls in arrears है, तो अभी क्या करना है? You should debit calls in arrears also because वो है loss आपका to share allotment account. Correct? Now we share allotment account. सीधा यहाँ से you will write, take it directly 1,50,000. Calls in arrears. How many people have not paid? So 500, one person holding 500 shares at 5 rupees. So 2,500 पे नहीं किया, आपको मिलेगा रिमाइनिंग 1,47,500. तो अभी मैडम किससे में मल्टीप्लाई करना है? डोंट टेक दैट कंफ्यूजन. 1,50,000 minus 2,500 you please write. Being the amount received except on 500 shares. तो यहाँ नहीं रिसीव हुआ, so you are writing that here. Clear है सभी को? I have just made the normal entries. Why I am doing it from the beginning? You people will understand it better. So do it from the beginning. Now the fifth entry is for the call. तो ये final call है. First होता है share final call. Transfer entry होता है. Share final call account debit to share capital आ जाता है. तो how much is the value? यहाँ पे 30,000 shares into 4, 1,20,000 value, 1,20,000 है value. Clear? Being the amount transferred to share capital. ये बात हो गया? Clear everybody? Yes. Sri Krishna, I will take your doubt. Please give me 1 minute. Okay. Now please see the next one. Sixth वाला क्या है? बैंक और रिसिप्ट एंट्री को हम लिखना है, बट हियर यू हैव अ कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स आने से व्हाट यू विल डू? आई विल डेबिट द कॉल्स इन अरियर्स बिकॉज इट इज अ लॉस टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आएगा. ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 विल कम हियर. अभी कितना है कॉल्स इन अरियर्स? 500 प्लस 1,000, 1,500 मिलके into 4. So
So it comes to 6,000. 1,14,000 is not paid. Being amount received except on 1,500 शेयर्स अभी है राम का और श्याम का, दोनों का नहीं मिला है. इज दिस क्लियर? हमने तो यहाँ तक फुल इश्यू एंट्रीज को पूरा कर दिया. वी हैव फिनिश्ड पासिंग द इश्यू एंट्रीज. अभी हम आएंगे forfeiture एंट्रीज का. व्हाट विल डू? विल कम टू द forfeiture एंट्री. अभी ऑल ऑफ यू प्लीज सी, here there is two people's accounts, correct? We have Ram's account also, we have Shyam's account also. So can we pass the entry together or separately? First we will do for Ram. Okay, so Ram का क्या entry आएगा? All of you please listen very very careful. Share capital forfeiture entry होता है share capital to shares forfeited to calls in arrears, correct? अभी Ram, did he pay you the premium value? Yes or no? Did Ram pay the premium value? Yes or no? Everybody, are you there in the class? Did Ram pay the premium value? What? Nobody's answering. Did Ram pay the premium value, my dear students? Where are all of you? Did Ram pay the premium value? Ram did not pay the premium value. Sri Krishna is raising. Wait, let me take the doubt. What happened? Yes, Sri Chat Krishna. is visible. Chat Sorry? is visible. Sorry. Chat is visible. Chat is visible. Disabled. Okay, okay. That's what he's saying. Okay, fine. Chat is disabled, it seems. Divya, can you just enable the chat? The students have to ask that out. Okay. Chat is enabled. So now you tell me whether Ram's shares you have received the premium. No, correct. So what you should do? I should debit the securities premium account also. Very good. Yes. Now please tell me how many shares? 500 shares of Ram. Face value है 10. So rupees है. So 500 into 2,000. Clear यहाँ पे? Now my dear students, इस तरह का sums पे you can do very easily. What you should do? First always calculate calls in arrears. Calls in arrears कितना है उसने, और you can also calculate the calls in shares forfeited. ये वाला easy होएगा. Shares forfeited. How much Ram has paid? Ram has paid only application. So उसने pay किया है 1,500 into 3 वो होता है 1,500. Calls in arrears को आप balancing figure ले सकते हो 4,500, और नहीं तो आप वो वर्कआउट भी कर सकते हो. He has not paid 5 plus 4, 9 rupees पे नहीं किया. तो being Ram's share forfeited. Clear है? Ram's shares forfeited. Okay, now let us go to Shyam. Shyam पे नहीं किया है, only this first call. तो उसका एंट्री कैसा आता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम विल कम? नो, बिकॉज ही हैज पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो वी विल गो टू शेयर्स फॉरफीटेड टू कॉल्स इन अरियर्स. सीधा क्वेश्चन है, वेरी इजी. इसका शेयर्स है 1,000, फेस वैल्यू है 10, so 10,000 आएगा. यस. अभी शेयर्स फॉरफीटेड कितना उसने पे किया? उसने पे किया application or allotment. Yes, everybody, he has paid application and allotment. Now my dear students, you should be very very careful. इस क्वेश्चन पे उसने प्रीमियम पे कर दिया तो remove that. Okay, you should remove this particular 2 rupees for Shyam. Why madam? Because he has already paid. तो हम प्रीमियम को क्वेश्चन से सबट्रैक्ट डिडक्ट करते हैं इसके लिए. तो शेयर्स फॉरफीटेड में उसने पे किया है फेस वैल्यू एप्लीकेशन का 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट 3. सो 3 plus 3 6 रुपीस पे किया into 1,000. सो 6,000 पे किया और 4 रुपीस लास्ट कॉल का नहीं पे किया, वो तो 4,000. नहीं तो मैडम ये वाला कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को. देन व्हाट यू कैन डू?
Just directly find out calls and arrears amount. Calls and arrears है 4 rupees, 1000 shares नहीं पे किया, इसको आप बैलेंसिंग फिगर जैसा ले लीजिए. Okay, see shares forfeited when the person is paying the premium. Okay, you should remove the premium from the question and take only the face value. तो इसने पे किया है एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का. क्यों मैडम प्रीमियम को निकल रहे हैं? The logic is the premium amount is already gone to the securities premium once the person pays. So you are not supposed to again bring it to shares forfeited. Premium वाला profit है वो securities premium में जाएगा. When you are forfeiting, you should not take that and come here. Is that clear? Everybody clear हो गया है? Being how many shares forfeited? 1000 shares forfeited. अभी मैं क्या कर रही हूँ? 1500 शेयर्स को रीइश्यू हुआ है, रीइश्यू किया है 2 रुपीज डिस्काउंट का. में मतलब क्या है? 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज सब्ट्रैक्ट करके 8 रुपीज मिला है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. So now coming back, my dear students, shares forfeited to share capital. Correct? This is the entry. कितना shares को shares forfeit हमने reissue किया जी. How much we are reissuing? We are forfeited. Sorry, we are reissuing only 1250. My dear students, we are forfeited 1500, but we are reissuing only 1250. Yes, very good. Mono saying 1250 into 10. So 12,500. But actual amount is 1250 into 8 ही मिला है. That is 4 rupees. 2500. 10,000 I have received. Shares forfeited में loss का value है 2500. Clear everybody? Loss का value है 2500. Please write the narration. Being 1250 shares reissued. Clear है? अभी तक clear हो, it should be clear. But now comes the actual thing. What it is? You are supposed to calculate the capital reserve. Clear? Now अभी capital reserve का, if it was total shares, मैंने total shares 1500 forfeit किया, 1500 reissue किया, debit minus credit खत्म. But now is it there? No, you have reissued partly. Correct? Now come to the working note. ये working note बहुत important है. राम का, श्याम का कितना है शेयर्स? इसका शेयर्स कितना कैंसिल forfeit किया है? राम का 500 किया है, श्याम का 1500. कितना रीइश्यू हुआ है? टोटल 1250. क्वेश्चन में दिया है 1250 में राम का पूरा शेयर्स इंक्लूड हुआ है. तो राम का पूरा शेयर्स इंक्लूड हुआ है, तो बाकी कितना है? 1250 माइनस 500, 750. श्याम का ही पार्टली रीइश्यू हुआ है. श्याम का शेयर्स पूरा का रीइश्यू नहीं हुआ है, पार्टली रीइश्यू हुआ है. क्लियर एवरीबॉडी? पार्टली इट हैज बीन रीइश्यूड. तो अभी क्या करना है? शेयर्स फॉरफीटेड अमाउंट राम का कितना है? 1500. वो तो मैं फुल ले रही हूँ, 1500 आ जाएगा. पर यहाँ पे श्याम का कितना है? 6000 है 1000 शेयर्स के लिए. तो इसको मैं कन्वर्ट करना है. कैसा कन्वर्ट करना है? 6000 रुपीज है 1000 शेयर्स का, बट मैं 750 को ही रीइश्यू कर रही हूँ. तो इसका क्या आएगा? कितना आएगा ये वाला? आई थिंक दे हैव डिसेबल्ड द चैट्स और इज देयर. करेक्ट. हाउ मच विल कम माय डियर स्टूडेंट्स? ये वाला करेक्ट, ये आएगा 4500. क्लियर? 4500. इसका टोटल कितना है? 6000 है. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? डेबिट वैल्यू और द अमाउंट इन द शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट है 6000.
आपका लॉस कितना आ गया है 2500। तो फाइनल एंट्री है शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व है तो ये आएगा 3500 3500। यस, कितना है आपका कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर करने का वैल्यू टोटल 6000 है। व्हाट इज 5500 1500 ऐड करके 6000 आ गया है और 2500 आई विल हैव टू सबट्रैक्ट ये वाला। क्लियर? तो मैं करके वो फाइनल कैपिटल प्रॉफिट है इट इज कम टू 3500। यस, any doubts being profit transferred to capital reserve? Vishali, correct. Very good. Profit on reissue transferred. Good, ma, good, good. Now this much is the concept. Now tell me, you people, anybody has doubt in this question? This is the type of a question. Same question might come in the exam and it has come also. Same question has come also. Let me zoom out a little bit and see if you're seeing the entire question at one particular place. Yep. Yes. Any doubts? You can raise your hands if you have any doubts so that I can unmute you people and I can take your doubts. You come for 15 marks. The entire issue entries है आपका 6 entries है, forfeiture entries है 2, 8, 9, 10. 10 marks it can come. Ma'am, do we do the total? Not required here. Okay? Okay, perfect. I think your doubts are taken. Now let us go to issue of shares for consideration other than cash. मैंने क्या किया? मैंने बोला है in the beginning of the chapter, shares can be issued for cash. आप कैपिटल के लिए शेयर्स को इश्यू करके मनी रेज कर सकते हो, यानी फॉर एन असेट व्हेन यू परचेज एन असेट, सो वो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश नहीं मिलता है, ओके, बट व्हाट मिलता है, यू विल गेट एन असेट। सो वो होता है ये ऐसा, यू शुड राइट द एंट्रीज। असेट अकाउंट टू द क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा क्रेडिटर? वो असेट कौन बेचता है उसका अकाउंट, और उसको हम देते हैं शेयर्स। सो क्रेडिटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों आता है। That's it. These are the two entries that will be coming. With this, we will be doing the illustration number 17. That's your next illustration, the illustration number 17. Please, all of you see, X Limited has issued authorized capital है X company का 90,000 shares at 10 rupees. The company has purchased land and buildings from Y Company Limited for 4 lakhs payable in fully paid up shares of the company. तो बहुत easy है. It has purchased land and building. Just write the asset name, which is land and building. What is the value? 4 lakhs. And 4 lakhs. Who's the creditor? Creditor's name is Y Company Limited. That's it. It is Y Company Limited account 4 lakhs and 4 lakhs. And this is 4 lakhs and this is 4 lakhs. So this is being the asset purchased, entry ka narration. And this is the shares being issued. And remaining what it is, total 9 lakhs authorized में 4 lakhs आपने दे दिया है इसका, फिर 5 lakhs आपने कैश के लिए इश्यू कर दिया. That is the understanding meaning. So कैश के लिए इश्यू करने से क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट. आपको मालूम नहीं है कितना इंस्टॉलमेंट क्या है, वो सब मालूम नहीं है, लाइफ इजी बन गया है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विच इज 5 lakhs and 5 lakhs. एक ही एंट्री, खत्म, फिनिश. This is shares issued for cash. Yeah, no application, no allotment, write one particular thing, no? Why you want to complicate your life, sir? Okay, whatever. I don't know if they've added a card thing. I am following the material given on the CA Institute website, okay? So, abhi dekho, please see this particular entries, 5 lakhs bank equity share. What they have written, you see. They have taken equity share application allotment करके उसने खुद एक installment बना दिया. Here like this also you can write. Now the main thing is balance sheet का presentation. Please see the balance sheet presentation. आपको balance sheet of X company limited ऐसा, if they are asking you in the question in the exam, please see this particular thing. So it will be first share capital will be 9 lakhs. वो है authorized का. Total 9 lakhs है
और असेट साइड में नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 4 लाख आपने बिल्डिंग खरीद लिया तो दैट यू विल शो इट हियर और आपको कैश बैंक में मिल गया 5 लाख का तो ये होता है 9 लाख का टोटल। अभी देखो ये नोट्स टू अकाउंट्स में ये नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में सभी वाला कैपिटल यहाँ पे लिखना है। ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल है 90,000 उसमें से इश्यूड कैपिटल मैंने पूरा इश्यू कर दिया तो 90,000 इंटू 10 आ गया। सब्सक्राइब सभी सब्सक्राइब कर दिया तो 9 लाख कॉल्ड अप पेड अप सबने पे कर दिया तो ये यहाँ आप ये वाला बात यू शुड ब्रिंग इट आउट टेलिंग दैट आउट ऑफ द total 90,000 shares 40,000 shares have been issued for the consideration and then land and building का यहाँ पे breakup balances with the banks यहाँ पे breakup that's all clear yes we have 2 illustrations which is pending to be done that is very easy now we will go ahead with the illustration number 13 okay इसमें why I am doing it at the last you know थोड़ा सा एक concept है So we are now going to see how we are going to do that particular question. Very easy concept only. Okay. I have explained to you the concept of pro-rata allotment. Correct? I have explained to you pro-rata allotment. So इसमें क्या होगा? What will happen is a person would have applied for example, let us take X has applied for 1,000 shares. पर उसको मिला है allotment हुआ है just 600 shares. क्या मैडम ऐसा बोल रहे हो when there is over subscription in the question what will happen is 1,000 shares he would have applied for you would have received money on 1,000 shares but उसका allotment हुआ है just 600 shares the remaining 400 shares का money है ना this money will be with the company has the money company will take the money and it will adjust we have spoken about pro rata का meaning क्या है adjust करना है correct pro-rata का meaning ये है कि you are going to adjust the money. So what will happen is in the question sometimes you might be given that this person has applied for so much, he's been allotted only so much. So इस information से मैं क्या करना है? What should I do in the question? Very simple. When you are doing a forfeiture and a reissue entry, shares forfeited में आप क्या amount लिखते हो? उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है. There is a small difference in your forfeiture entry. Now let us read the question and then check up how to do this thing. So that is your illustration number 13. Everybody with me? Let us go to the illustration number 13. Shami has applied for 1,000 shares of company XYZ. Paying application money of 2 rupees per share. Okay, 1,000 shares उसने apply किया and he has paid 2 rupees per share. But allotted only 600 shares. यहाँ हुआ है pro rata allotment. इसने ज्यादा amount pay कर दिया ज्यादा shares सोच के, but he received a lesser number of shares. Now the shares have a face value of 10 and a premium of 2 rupees per share, which is payable as allotment including premium. Final call is 5. तो first हम लिखते हैं very clearly what is it 10 rupees का breakup है 2 5 5 ये वाला 10 rupees नहीं है 10 plus 2 में issue किया है 12 rupees है this is 3 plus 2 हुआ है allotment में premium आ गया है। तो इस पर्सन X ने क्या किया उसने क्या पे किया क्या नहीं पे किया X ने एप्लीकेशन मनी को पे कर दिया और फिर everybody see X ने application okay not X Shami does not pay allotment money and final calls his shares are forfeited pass the forfeiture entry यहाँ just forfeiture entry pass करना है। आप बताओ क्या होता है forfeiture entry share capital account debit यहाँ पे securities premium भी नहीं पे किया है तो securities premium account debit to shares forfeited account to मैं क्या करती हूँ ना now what I will do you know instead of showing all scenarios he has not paid to I will show share allotment what is the amount and share call what is the amount. So I am writing it like this is clear
Any doubts? Okay, very good, Sharma Vivek. Now please listen. Don't write. Please listen. Listen. So 1000 shares into the face value is 10. तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा. Yes, everybody with me? इसमें तो कुछ भी नहीं change है. Same. Now come to the securities premium. 1000 into 2. ये आता है 2000. Till this any doubts you have? ये वाला होता है same. अभी all of you please see. Now please see. Shares forfeited in case of a pro-rata allotment. आपको ये thumb rule follow करना है कि कितना पे किया है ये पर्सन. Please tell me how much he has paid this person. 2 rupees he has paid. ये usual sum होने से what we will do? We will take 2 into 600 and multiply right here. But ये sum है pro-rata allotment. Pro-rata allotment में उसने पे किया है 1000 shares में. तो he would have paid 1000 shares into 2. कितना है? 2000 rupees पे किया है. This one is understood? Everybody understood? This is the important point in this question. सभी questions पे you will just take the allotted का, because applied का कुछ information नहीं है आपके पास. तो वो क्या दिया है वो आप समझते हैं कि वो allotment हो गया, तो वो shares लेके you will do the question. So in each and every question that we have done till now, you did not have information on how much is applied. No. Everywhere it was only given shares of X, shares of Y, shares of this Shami, shares of Jaddu, something. Correct? So in this question, when you have applied and it is a pro-rata allotment, please remember in shares forfeited, you should take applied into this. You remember when we got pro-rata allotment in the receipt entry of application, we took the more number of shares and multiplied with the value. No, same concept will come here. More number of shares into the application, you have to show it under shares forfeited. Simple. Okay. We are not refunding. Very good. Monu has raised the doubt correctly. Madam, 400 shares are extra. No, madam. How much he has paid extra? 2 rupees. So this 800 rupees, you are not refunding. You are not refunding. Rather, you tell me, allotment में कितना पैसा चाहिए already? Now 600 shares you have allotted. You have asked him to pay 5 rupees. 3000 rupees he is supposed to pay. But what is the amount refund? आपके पास कितना है? 400 shares पे 2 rupees मैंने लेके मेरे पास रख दिया है, तो ये है 800. So first मैं इसको यूटिलाइज करती हूँ allotment का. So allotment में मेरे को 3000 चाहिए, but I have 800. How madam you are telling you have 800? Simple logic ma. 1000 shares I have allotted only 600. Correct? So what is the excess amount he has paid? Or I can explain it to you like this. इस 800 को we can arrive it in another way also. कैसा हम arrive कर सकते हैं? Application money 1000 into 2 उसने पे किया है 2000. Correct? इतना पे किया है. But how many shares आपने allot किया है उसको? 600 shares ही allot किया है. तो 600 तो अभी कितना चाहिए आपको? Just 1200 चाहिए. But उसने कितना पे किया है? 2000 पे किया है. तो आपके पास एक्सेस कितना है? 800 रुपीज. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 1000 शेयर्स माइनस 600, 4000 शेयर्स का एक्स्ट्रा मनी 2 रुपीज आपके पास है, वो भी 800 है. तो ए 800 को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट अगेन आस्क हिम नो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दिस मनी. कैसे आप अगेन पूछ सकते हो उसको? अभी मेरे के पास और मेरे को चाहिए 600 शेयर्स इंटू 5. क्यों मैडम 600 into 5? 600 अलॉटमेंट हुआ, ये वाला चला गया क्वेश्चन से. 600 into 5 rupees, total I need 3000. 800 already I have, so अभी 2200 चाहिए. Now please see what is the final call value. Final call value है 500. अभी call में मेरा 600 shares into 5. Now 3000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 800 आपका एक्सेस खत्म हो गया. किसी और एडवांस है आपके पास? डू यू हैव एनी अदर एडवांस आफ्टर पेइंग दिस पर्टिकुलर 800? यू एडजस्टेड 800 विद दिस. नो मोर बैलेंस इज देयर इन द क्वेश्चन. तो अभी यू नीड 5 rupees 3000 एंटायरली. तो यहाँ पे आ जाएगा 3000. Somewhere the account is not balancing, no?
Oh, sorry. Securities premium. Okay, I have taken this wrongly. My dear students, this is wrong, wrong, wrong. Because I should take only the shares allotted. Yes, yes, it is not matching. मैंने shares allotment we should take. See, I made a very big mistake. All of you please see here. My dear students, whenever applied is to allotted comes, I should take the allotted and then do the question. This I forgot. I made a mistake here. So ये अभी बन जाता है 6,000. This becomes 1,200. Now it will tally. Okay. क्यों madam? Then 1,000 shares का कहाँ पे we use that? We use that only in the shares forfeited because to take or to understand how much he has paid. So applied आ गया question में. So applied say what you should do in the forfeiture entry. सिर्फ shares forfeited account में you should take that value. That's it. Everybody understood? Everybody understood? For the benefit, I will explain once again. Okay. Now coming back, whenever we have applied is to allotted, is tarah ka shares, it's coming in your question. Don't worry. What is the only thing that you should remember? This allotted value will be used everywhere. Everywhere allotted value only will be used. 600, 600 everywhere. Except in the shares forfeited alone, you will use the higher number of shares into the amount paid. Clear everybody? That's all. Do you have any doubts with this? Everybody? Just I wanted everybody. I want everybody to answer. Sri Krishna, Monu, everybody. Meenu, you understood? Okay, good. Others? No problem. If you go back and again try, it will come back. You can do it very, very easily. Okay. Now we have only illustration number 7. But before that illustration number 7, I would like to do a little bit of theory of your chapter number, your unit number 1. Okay. And just of mono. Okay. I'll just do this particular thing. Let me listen. So coming back to the point, what is this particular unit number 1? So your unit number 1 talks about theory. Okay. So in the theory, what is that you have to study or what is that it is very important? The first thing is you have to understand what are the features of a company. So what is company? Company has been formed from 2 words. One is com and the other one is panis. This is a Latin word. Okay. Com is coming together. Panis is discussing something over bread. Okay. What's this? What is compan? So, in the earlier days, in the olden days, the business organization or company was very small, wherein, the company was very small, wherein the people who were doing the business, they used to sit for a gathering, for lunch, for dinner, and then they used to talk about the business deals and everything. But now, company has assumed greater significance. It has become very, very, very important. And now, company has become a bigger picture. So, today, in today's world, if you want to open a company in India especially, you should get yourself registered with the Companies Act 2013. Where you should get registered? You should get registered with the Companies Act 2013, not 15, 2013. Okay. Now this Companies Act, the moment you get registered, what happens is it gives you few statuses. Okay. It gives you few statuses. What are these statuses? The first status that the company gets, it is a legal entity. The legal entity meaning is company is legally born. Okay. That is, it is like an artificial person. Artificial person ka matlab kya hai? It can't eat, it cannot breathe. That it cannot do like our natural persons. But other things it can already do. It has a separate legal entity. But it is not a citizen. It is not citizen of your country. No, you cannot call it. It cannot go vote. It cannot do all of that. But it is having all the other rights like an artificial person, except not being a citizen. It is having a legal existence. Next, you have a separate legal entity. इसका मतलब है owners and the company not one and the same. Owners have made a mistake, file case on the owners. Company has made a mistake, file case on the company. तो ऐसा split हो जाता है. Because I told you company itself is a artificial person. So it is irrespective.
ये बोलते हैं नेक्स्ट डायलॉग है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. सो इसका मीनिंग है परपेचुअल सक्सेशन. सो आप है नहीं है, प्रमोटर्स है नहीं है, मेंबर्स है नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है नहीं है, कंपनी विल कंटिन्यू टू गो. This is one of the most important feature of the company. It has got a perpetual succession. And then company can enter into agreements using a particular stamp. But this is called common seal. ये होता है company का signature. Like we sign and enter into contracts. The company also has a common seal to enter into the contracts. And the next one is you have a limited liability. मैंने बोला है sole proprietor में और partnership में the biggest disadvantage is it is unlimited liability. Business का assets खत्म हुआ, फिर liabilities still they are there, then from where? From the personal assets. But in the case of a company where shares are issued, the shareholder will be liable only to the extent of unpaid value. इसका मतलब है 10 rupees share issue किया है, 5 rupees call किया है, मैंने pay कर दिया over. Remaining 5 rupees ही मेरा liability है. I cannot or I will not be asked to pay even 1 rupee more. Okay? तो ये वाला बेनिफिट मेरे को मिलता है लिमिटेड लाइबिलिटी में. ओके, देन ये होता है ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट दोनों अलग है. दे आर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी. क्लियर? बोथ आर सेपरेट, दे आर नॉट वन एंड द सेम. और सभी कंपनी एज पर सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है. क्यों मैडम, क्या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेंटेनिंग? Till now you people studied chapter 7, chapter 8, chapter 9 telling balance sheet, P&L. So this particular section of the Companies Act, it says every company at its registered office. कौन सा वाला registered office? Head office का address वो mention करता है register of companies में register होने के time पे. At that registered office, every company is supposed to maintain the books of accounts as required, both in physical and electronic form also. अभी तो टैली कुछ ERP आ गया है, उसमें तो आप ऐसा इंफॉर्मेशन डालने से it will give you all the reports. So उसमें books of accounts maintain करना है. Is this clear? तो ये books of accounts का मतलब क्या है? Books of accounts are nothing but simple thing. First one is your balance sheet. Balance sheet का ये फॉर्म है आपका शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट दिया है. तो आप ये वाला यूनिट पढ़ने के टाइम पे इफ यू लुक एट द फॉर्मेट दैट इज इनफ. बट अभी पूछेगा मैडम इस फॉर्मेट में मेरे को करना है नहीं. शेयर्स में दे कैन आस्क यू एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बट कंप्लीटली दे माइट नॉट आस्क यू आल्सो. ओके, so what you can do is if that is not being simple things will be asked, so that sums you can go through them. But for the others, it is not required for you people to put all this particular in a particular format. Normal format you can follow. Okay, this is only given for your studies purposes. Books of accounts का part होता है balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, changes in equity and notes to accounts. ये पांचों मिला के books of accounts हम कहते हैं. Is that clear? Now अभी ये सब है features of companies. So कितनी सारी companies हो सकता है? There can be I think 10 to 12. आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा. फर्स्ट टाइप का कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी दोनों मिला के 51% ऑफ द शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं. उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. सो दोस कंपनीज इन विच द either the center or the state or both of them together are holding 51% of the share capital, then it will be called as a government company. So then you have a second company is foreign company. Foreign company is that company which is established, has a place of business, has its head office outside India, but has a place of business in India, like the MNCs. So multinational companies are the best examples, wherein the actual company is situated outside, but they have a branch in India also. So that is the foreign company. The third type of company is a public company. A public company is one which is not a private company. Then what is a private company? A private company is one which is not listed on the stock exchange. So whatever we are talking here, 10,000 shares I'm issuing to the public, इतना पे नहीं किया, इतना पे किया, ये सब public limited company है जिसका shares list हुआ है stock exchange पे. So listed companies के बारे में ही we are doing this. So private companies is one which is very closed. उसके friends का, उसका directors का known circle में ही वो shares को issue करते हैं. So that is a private company. यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल का कंडीशन है
पब्लिक कंपनी 5 lakhs मेंटेन करना है, पर प्राइवेट कंपनी कैन मेंटेन 1 lakh, दैट इज इनफ. number of members also there is a criteria, I think you can check that. So मैंने बोला है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, देन I told you पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड देन 1 person कंपनी. ये 1 person कंपनी होता है, एक ही पर्सन है डायरेक्टर, एक ही पर्सन है मैनेजर, एक ही पर्सन सब कुछ है. सो वो है 1 person कंपनी. A company limited by shares. Limited by shares का मतलब है, we just saw now, whatever shares are there, if you have the limited liability by on the shares, that particular value, it is called as limited company limited by shares. यानी sometimes company can be limited by guarantee also. So किसी members ने guarantee देके a personal liability को include करते हैं, तो वो बनता है bank, the company limited by guarantee. Okay. होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है. ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, ये कंपनी होता है, एक कंपनी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी. सो द कंपनी दैट इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, एंड द अदर कंपनी विच इज गेटिंग कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी. तो ये होल्डिंग कंट्रोल कैसा हो सकता है कि 51% ऑफ द शेयर कैपिटल को होल्ड करने से आपको कंट्रोल आ जाएगा, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द मैनेजमेंट पीपल, सब कुछ यहाँ कौन सा है होल्डिंग कंपनी में, वो ही है सब्सिडरी कंपनी में, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी रिलेशनशिप आ जाता है. तो 9 I have told. Then you have something called a small company, then you have अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है. अनलिमिटेड कंपनी वो होता है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड. एंड फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1, with that we finish the unit number 1 and the time is 1 o'clock. Okay. 50 for private. Okay, the number of people are 50. Okay, Sunil Ashwani, good. And finally we have one more question to be finished, that is the illustration number 7. Okay, I will just very quickly do that illustration number 7 and then we can wind up the class. The illustration number 7 I should have done yesterday. It is a very easy concept. Okay, but what it is, you have the concept of the शेयर्स, प्रो-रेटा शेयर्स. सो कुछ शेयर्स अप्लाई किया है और उसमें से अलॉटमेंट लेस नंबर ऑफ शेयर्स को हुआ है. अभी मैंने तो इलस्ट्रेशन 13 आपने बताया ना, सो लाइक दैट. सो वी आर गोइंग टू सी इन दैट पर्टिकुलर फैशन. somebody has raised the hands. Okay, please don't raise any hands because I need to complete this and then go. Okay, I'll then take your doubts a little later. Everybody very clearly please see illustration 7. This one time came in the exam. Okay, that is why I'm going to do this particular thing. All of you please see, very important question. JHP Limited. So I will be doing the working notes. JHP Limited is a company with an authorized capital of 10 lakh shares into 10 rupees each, of which 6 lakh shares has been issued and fully paid on 30th. So 10 lakhs में already 6 lakhs का हो गया है, finished. The company proposed to make a further issue of 1 lakh shares at 10 rupees at a price of 14. तो first thing क्या है, इस illustration पे you should write 1 lakh shares इसने issue किया है at the rate of 10 plus 4, 14 rupees. और कौन सा कैसा issue किया है, 2 rupees on application, 5 rupees including the premium. तो premium 4 rupees है, so 1 plus 4 बना है, और final call में balance का पैसा आएगा, तो ये वाला 14. तो बैलेंस अभी तक इसने कॉल नहीं किया है, तो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एप्लीकेशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सी दिस. माय गॉड, अगेन आई गॉट डाउन. माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सी हाउ द 1 lakh shares have been received. Applications were received for 3,55,000 shares. कितना आ गया, 3,55,000 shares का आ गया. So now I will do the first table. मेरा working note में applied कितना, allotted कितना. applied मेरे 3,55,000 shares apply किया है, but I have issued only 1 lakh. 1 lakh को मैंने कुछ adjustment किया है. कैसा किया, क्या किया, अभी हम question पढ़ेंगे. We will read the question. Yes, please see. Applicants for 5,000 shares were being allotted in full. तो इसका मीनिंग है कैटेगरी 1 में
5000 शेयर्स जो अप्लाई किया है उसको हमने 5000 शेयर्स अलॉट कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओवर। नाउ सेकंड कैटेगरी को देखेंगे हम। सेकंड कैटेगरी में है applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 shares applied for। तो फर्स्ट ये बोल रहे हैं applicants for 30,000 shares, so 30,000 शेयर्स अप्लाई किया है, पर मैंने उनको कैसे दिया है, रेशियो में दिया है। दैट मीन्स मैं 2 शेयर को अप्लाई किया तो मैं 1 शेयर ही दिया है। तो सेकंड है, द सेकंड पीपल आर 30,000 शेयर्स दे हैव अप्लाइड, दे हैव रिसीव्ड 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। इसका मतलब है 30,000 इंटू 1/2, तो मैंने अलॉट किया है जस्ट 15,000 शेयर्स। क्या किया है मैंने, 30,000 शेयर्स अप्लाई किया है, बट मैंने उसको हाफ दिया है 1:2 रेशियो में, ये हाफ करके 15,000 मैंने दिया है। एंड देन द थर्ड वन, देखो व्हाट इज द थर्ड वन, very very important, I want you people to listen very carefully। The third one is this: applicants for 3,20,000 shares received, okay, an allotment of 1 share for every 4 shares applied for। The allotment money due was retained, excess being rejected, okay। The money due on the final call was received on the due date, clear। अभी यहाँ पे आ जाओ, द लास्ट कैटेगरी ऑफ 3,20,000 को कितना शेयर्स मिला, 1:4। दैट मीन्स 3,20,000 4 शेयर को 1 शेयर अलॉट किया है, तो ऐसा आता है 80,000। अभी माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, इफ यू ऐड दिस 5,000 है, 30,000 है, प्लस 3,20,000 है, 3,55,000 आ गया। यहाँ पे 5,000 है, 15,000 है, 80,000 है, 1 लाख आ गया। तो व्हाट आई डिड, द एक्सेस शेयर्स आई वाज हैविंग, तो एक्सेस मनी इज इन्वॉल्व, यहाँ पे बहुत सारा एक्सेस मनी इन्वॉल्व है। तो उसने ये बात भी बताया है, यहाँ पे कुछ एक्सेस है नहीं, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, एक्सेस है कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सेस है, यस 15,000 शेयर्स का एक्सेस मनी है आपके पास, यहाँ पे है, यस बहुत सारा है, 3,20,000 माइनस 80, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 शेयर्स, मनी इज एक्सेस। कितना है मनी माँ, मनी इसने पे किया है 2 रुपीज, तो यहाँ पे कुछ एक्सेस है, नो, सो 0 हो गया। यहाँ पे कुछ एक्सेस मनी है, यस कितना है, 15,000 इंटू 2। क्यों मैडम आप 2 ले, बिकॉज एप्लीकेशन मनी उसने पे किया होगा, तो यहाँ होता है 30,000। ये वाला है 4,80,000 होता है, कितना होता है, 4,80,000। टिल दिस डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, टिल दिस कोई डाउट्स है किसी को, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, आई जस्ट वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला, मैंने रेशियो बना के 3 कैटेगरीज को इसको डिवाइड करके मैं यहाँ पे ऐसा लिख रही हूँ। क्लियर है, सभी क्लियर है, वेरी गुड। नाउ लेट अस गो टू द अलॉटमेंट मनी। अभी अलॉटमेंट मनी कितना मेरे को चाहिए, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, कितना चाहिए, इस कैटेगरी से 5,000 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज, सो 25,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी आई वांट, करेक्ट, 25,000 है अलॉटमेंट मनी, मुझे अभी चाहिए। यहाँ कुछ एक्सेस है, नो, तो ये सारा पैसा पे करना है, कौन, शेयर होल्डर्स। अभी मेरे को सारा पैसा पे करना है, क्योंकि इस कंडीशन में कुछ भी एक्सेस नहीं है, तो एक्सेस नहीं रहने से दिस 25,000 दे आर सपोज टू पे। ये वाला बात क्लियर है एवरीबॉडी, यहाँ कुछ एक्सेस शेयर्स नहीं है, इस कैटेगरी से हम 25,000 अभी लेना है। नाउ वी हैव टू रिसीव द 25,000। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में 30,000 अप्लाई किया, तो उसको कितना मिला, 50,000 दे हैव रिसीव्ड, करेक्ट। सो अभी ये वाला कितना अमाउंट पे करना है, 15,000 शेयर्स। कौन सा शेयर्स अलॉट हुआ, वॉट एवर शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड, दैट इनटू द अलॉटमेंट मनी 75,000 दे शुड पे। कितना, 15,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, 5 रुपीज है, 75,000 पे करना है। नाउ यू टेल मी, आपके पास एक्सेस है कुछ,
यस मैडम, एक्सेस है तो अभी क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आप पूछते हो, हाउ मच यू विल रिसीव। एक्चुअली यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं है, सो 25,000 सारे के सारे आई नीड, बट इसमें 75,000 आई नीड बिकॉज 15,000 इंटू 5 दिस इज माई रिक्वायरमेंट, बट व्हाट अमाउंट एक्स्ट्रा है मेरे पास, 30,000 है, तो यहाँ में 45,000 उससे पूछना है। यस, नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी में 3,20,000 अप्लाई किया, मैंने अलॉट किया कितना, 80,000 ही मैंने अलॉट किया, तो अभी मेरे को पैसा कितना चाहिए, 80,000 इंटू 5 रुपीज चाहिए, तो 4 लाख रुपीज बस आने से नो प्रॉब्लम। आप अभी देखो आपके पास कितना है एक्सेस, एक्सेस कितना है, 4,80,000 है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ही कैटेगरी 3 लोगों का एक्सेस मनी 80,000 है। तो ये एक्सेस मनी आप एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास एक्सेस मनी है, तो उसको आप रिफंड कर रहे हैं। ये बात कहाँ बताया मैडम, ये बात बताया है आपके क्वेश्चन में। Here everybody. Now category 1 there are no excess shares. So 5,000 into 5 I need 25,000 application money. I don't have any excess money. So now I will ask them give me 25,000. Now come to the second category. In the second category excess is there. How much? 30,000. Now how much you want for allotment? I have been allotted 15,000 into 5, 75,000 I need money for allotment. But what are they saying? Already I paid 30,000, subtract that, so remaining 45,000 I will pay now for allotment. Now my dear students, come to the third category. Third category excess is 4,80,000. But out of the 4,80,000, how much you want for the allotment? It will be 80,000 into 5, 4 lakh rupees, correct? 4,80,000 excess money, 80,000 I have to refund. Abhi मैं फटाफट I will do the entries. So first entry will be for application. Bank account to equity share application. कितना amount आएगा? Can somebody tell me? I am passing one single entry. How much it will come, Manjunath? Good. 3,55,000 people have applied. Correct? Into 2. So 3.55 lakhs into 2. 7 lakh and 10,000. Always I told you pro-rata allotment over subscription question में first entry के लिए higher number of shares you will take. Correct? Same thing I am following here. You write the narration. Is this clear? Now let me write based on this. I will put the next entry here. It will be, what is the next entry ma? Receipt के बाद transfer entry. Transfer entry होता है equity share application account debit to, मैंने क्या बताया, whenever you have an over subscription sum write ABC entry. ABC entry ये होता है to share capital, to bank and to share allotment, correct? And to share allotment. Is this clear? अभी equity share application ये वाला सीधा आएगा 7 lakh and 10,000. Is this clear? 7 lakh and 10,000. Now share capital, what is the value you should write? All of you think and tell me. Share capital, what is the value you should write? Manjunath, very good. I want others also to answer. Share capital, what is the value? Face value. Face value कितना है? 2 rupees. Now madam, इसमें कंफ्यूजन है, 2 रुपीज नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन का फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 2 रुपीज है ना मीनो, 10 रुपीज टोटल फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 2 रुपीज. नाउ मैडम आई शुड टेक 355 और 1 lakh. 355 goes from the question with the first entry, oh gone, so it will be 1 lakh I have allotted. 1 lakh into 2, 2 lakh rupees madam, this is the value. Now bank, did you reject refund किया है कुछ? Yes, from the table I understand that 80,000 has been rejected, correct? अभी share allotment कितना मिलेगा? 4 lakh and 30. इसको balancing figure ले लो. 4 lakh and 30 will be the value. कैसा madam 4 lakh and 30 has come? Will you tell us like this? I will tell, don't take any confusion, just write the balancing figure. Is this clear? Okay. Now we are going to the share, equity share allotment. So first है equity
share allotment account debit to equity share capital, यहाँ है securities premium भी आएगा क्वेश्चन पे, करेक्ट? So can you tell me equity share allotment के पास it will be 1 lakh into 5 lakhs, okay? 1 lakh into 5 equity share capital का फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख शेयर्स इंटू 1। फेस वैल्यू का मतलब है अलॉटमेंट में क्या है फेस वैल्यू? 1 रुपी, तो यहाँ 1 लाख आएगा और यहाँ 4 लाख 4 रुपीज है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? अभी माय डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये वाला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा 5 लाख। माय डियर आई एम सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है? यहाँ पे 5 लाख है और ये डेबिट पे कितना है? डेबिट पे 4 लाख एंड 30 है। सो वी ऑलरेडी हैव आउट ऑफ 5 लाख 4 लाख 30 हमारा पास है, तो हम रिमाइनिंग ही वी शुड आस्क फ्रॉम द पीपल। सॉरी, रिमाइनिंग वी शुड आस्क फ्रॉम द पीपल। तो ऐसा आता है। एंड अभी फाइनल कॉल करने का क्या है? फाइनल कॉल भी ऐसा है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 रुपीज इंटू 1 लाख 7 लाख और बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7 लाख और 7 लाख। इस क्वेश्चन पे आपको कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन पे यू डोंट हैव एनी अरियर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। बट हमको ये बात रिफंड का कितना है, हाउ मच मनी इज इट इज बीइंग एडजस्टेड, दिस ऑल इज बीइंग done through a working note. Clear everybody? Yes? The time is 1:15. Do you have any doubts with this? So with this, we have finished Unit 1 and Unit 2 of your company accounts. Okay? 4 more units are there and I have 1, 2, 3 classes. How many classes are there for me? I think 3 more classes are there. 3 or 4, I'm not sure. I'll check the timetable. Okay? So we will try to finish the remaining part of it. So I completely did all the 17 illustrations except for 3. Except for 3, I had given you homework and you people also told me that you have done. 4 classes are there. Okay. So 4 classes, 4 units, comfortably we can finish it off. So company accounts is one part wherein it is quite easy, my dear students. This is the maximum part. All of you, please work out the questions and do it properly. Clear? Okay. So I think, yeah. Did you all understand today's class? Yeah. Any doubts, you people? I want all of you to go back and practice. I will give you one more tip also for practicing better. Take your 12th standard NCERT textbook, the CBSE textbook. Usme you have this particular chapter where you have a lot of practice questions. So from the beginning, तो ओवर सब्सक्रिप्शन आने से उस तरह का 5 सम उसमें प्रैक्टिस करो, और फेस वैल्यू प्रीमियम में आने से उस तरह का 5 सम को आप प्रैक्टिस करो, कॉल्स इन अरियर से कॉल्स इन एडवांस से उस तरह का 5 सम्स और क्वेश्चंस यू टेक एंड you people do it. Krishna Jay Kumar, this will be coming for 15 marks in the exam. So like this, take your NCERT textbook and practice. The more you practice, you will get control. इस तरह का presentation लिखने से आपको clarity मिल जाएगा. तो follow this presentation. Try doing more and more sums. It will become very easy. Yeah. Thank you, students. So meet you all on Tuesday. Bye-bye. Yeah, please end the session.